ସାର୍ ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସେ। बेटा मैं बोल नहीं रहा हूँ, शुरू करेंगे।
बेटा मेरा वॉइस आ रहा है और स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है? एक बार लिख लो, फिर शुरू करते हैं। ओके, संजय बोल रहे हैं यस सर। ओके, थैंक यू। So in our last class we are discussing regarding directors. I have told that directors are the person who manage a company. Okay, a company is owned by shareholders. The shareholders normally appoint some person to manage the company, and these persons are known as directors. Combinedly, all the directors is known as board of directors or board. Board constitute all the directors of a company. The board manages the company through meetings, through board meetings. Okay. Next, we have discussed what are the different types of director. We have discussed there are many types of directors like or executive directors and non-executive directors. In non-executive directors are also known as ordinary directors. Executive directors may be managing director, it may be director HR, director finance, etc. Those are known as executive directors. Next, we have discussed nominee directors. There are some financial institutions who appoint some directors. Those are known as nominee directors. We have discussed additional director and alternate director, which are appointed by the board for a temporary period of time. Those are known as additional director and alternate director. And we have discussed the concept of small shareholders directors. To have representative of the small shareholders, there may be some directors which is known as small shareholder directors. Then we have discussed different type of directors. Today we will discuss the concept known as what are the power of directors. एक डायरेक्टर का क्या क्या पावर होता है? What are the powers of the directors? Normally, the power of the directors can be classified into two parts. First, general powers. Next, power under 179(3). Next, power under Rule 8 and other powers. So the power of directors can be classified into four parts. General powers, power under 179(3), power under Rule 8 and other powers. First, we will discuss what is the general power of a director. Generally, a director has all those powers which lead to manage the company. एक कंपनी को मैनेज करने के लिए जो काम करना होगा, डायरेक्टर इज ऑथोराइज्ड टू डू सो unless the following cases. So a director can do what the company is authorized to do unless the following two cases. A director cannot do anything beyond the Companies Act 2013, beyond the powers given under Companies Act 2013. So second is a director cannot do anything beyond memo and article. So the director has to obey the rules, regulations of Companies Act, memorandum of association of the company, and article of the association of the company. Within these three boundaries, so there are three boundaries of the powers of the directors. What are the powers of the directors boundaries? One is Companies Act. It cannot do against Companies Act anything. Then there is memorandum of association, memo, and there is article of association, and within these the director has to function. He can do anything beyond within the scope of these three acts. Okay, these three documents. So a director can do anything which a company can do and which is required to manage the company under the general powers of the directors. Next, the specific powers of the directors are expressed in section 179(3). And all these matters a director can do, okay, at the meeting of the board. There will be a board meeting. In the board meeting, the director can do the following activity. First activity is to make
call on shareholders. If any money is due from to be if any money is due to shareholders of the company, suppose आपने एक कंपनी का 200 रुपये का शेयर खरीदे और 150 रुपये दिए हो, तो 50 रुपया बाकी है। वो 50 रुपया डायरेक्टर आपसे मांग सकता है। नॉर्मली जब भी हम शेयर खरीदते हैं, शेयर का पैसा एक साथ दे सकते हैं या नहीं तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब शेयर का इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं, पहला पैसा दिया जाता है एप्लीकेशन मनी। सपोज 100 रुपये का शेयर है, आपका एप्लीकेशन मनी 30 रुपया है। नेक्स्ट जब आपको शेयर मिल जाएगा तो आप देंगे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी है सपोज 40 रुपया। बाकी जो पैसा रहा उसको बोलते हैं कॉल मनी। कॉल मनी कितना है, सपोज कॉल मनी है 30, तो शेयर कितने का हो गया, 100 रुपये का शेयर। 100 रुपये का शेयर का आप ऐसे पैसा देते हैं। सपोज कोई कॉल मनी बाकी है, आप 70 रुपीज दे दिए हैं, 30 रुपीज नहीं दिए हैं, the director can make call when this money is required by the company. Director is authorized to buy back share of the company. एक कंपनी अपना खुद का शेयर खुद खरीद सकता है, जिसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। सो ए कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट टू इश्यू सिक्योरिटीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। सिक्योरिटी का मतलब डिवेंचर इशू कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं, इंडिया के बाहर कर सकते हैं। शेयर होल्डर डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पर बोरो मनी पैसा उधार ले सकते हैं, कंपनी का पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी किसी को लोन दे सकते हैं, किसी को गारंटी दे सकते हैं, कोई सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन या गारंटी ले सकते हैं या दे सकते हैं। टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंड बोर्ड रिपोर्ट। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इन सबको अप्रूव कर सकते हैं। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई का मतलब आपका 3 बिजनेस है और एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। टू अप्रूव अमालगमेशन, कोई अगर 2 कंपनी मिलना चाहते हैं, मर्जर, एक्विजिशन, इन सबका अप्रूव डायरेक्टर कर सकता है। टू टेक ओवर कंपनी, किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, उसका कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकते हैं। एनी अदर मैटर व्हिच मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो इसका मतलब डायरेक्टर ये सारा काम बोर्ड मीटिंग में कर सकता है। Director is approved to do all these works under section what? Under section 179(3). These are the powers given to directors under section 179(3). And what are the powers given to directors under Rule 8? The Rule 8 of the Companies Act tells the following powers can be exercised by the directors. What are the powers exercised by the directors under Rule 8? First one, to make political contribution. डायरेक्टर चाहे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट दे सकता है, बीजेपी को पैसा दे सकते हो, कांग्रेस को दे सकते हो। टू अपॉइंट और रिमूव KMP, व्हाट इज KMP? की मैनेजरियल पर्सनल, कंपनी का हेड, चीफ फाइनेंस, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, दीज आर की मैनेजरियल पर्सनल। इन सबको अपॉइंट कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। टू टेक नोट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल ऑफ 1 लेवल बिलो की मैनेजरियल पर्सनल। 1 लेवल बिलो मींस KMP, सपोज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूवल भी कर सकते हैं। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, कंपनी का इंटरनल ऑडिटर कौन होगा, सेक्रेटरियल ऑडिटर कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ठीक से कर रहा है या नहीं, कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी चल रहा है या नहीं, उसका ऑडिट किया जाता है, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। वो काम करने के लिए इंटरनल ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन जो मेन ऑडिट होता है कंपनी का, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। उस ऑडिटर को अपॉइंट करने का पावर डायरेक्टर के पास नहीं, उसका पावर किसके पास होता है, शेयर होल्डर के पास।
डायरेक्टर सिर्फ कंपनी में इंटरनल ऑडिटर या सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। टू नोट टेक ए नोट ऑफ डिस्क्लोजर्स ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट एंड शेयर होल्डिंग। अगर कोई मैटर में कोई डायरेक्टर का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है, सपोज एक कंपनी का बीड हो रहा है, वहां पर जो जो आदमी टेंडर दिए हैं उसमें से एक डायरेक्टर का बेटे का कंपनी भी टेंडर के लिए अप्लाई किया है, तो उस टाइम में उसका पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है। उस टाइम में जब भी वो डिसीजन लिया जाता है, वो डायरेक्टर खुद को अलग कर देगा, बोलेगा यहाँ पर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, बाकी सारा लोग डिसाइड करे मेरे बेटे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं। नेक्स्ट, टू बाय सेल इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द कंपनी, टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है, टू रिव्यू चेंज द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट and to approve quarterly, half yearly, annual financial statements and financial results। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट, इसको क्या कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, और क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं और इसको ऑथोरिटी दे सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं ये सबको। नेक्स्ट, उसके बाद में व्हाट आर द अदर मैटर्स व्हिच डायरेक्टर्स कैन डू। What are the other matters? Directors can issue share. Directors can allot shares. The director can appoint managing director, whole-time director. Director can prepare consolidated annual accounts. Directors can approve interim dividend, recommend final dividend, appoint sole selling agent of the company, merger and acquisition of the company. Director can use capitalization of reserve and issue bonus share, फोकट का शेयर दे सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट ऑडिटर्स इन कैजुअल वैकेंसी, मैं बताया था दो डायरेक्टर को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी जब भी होता है, कोई डायरेक्टर रिजाइन कर दिया, उसके बदले में कोई ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर कर सकते हैं। अपॉइंट होल टाइम सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी फॉर कंप्लायंस सर्टिफिकेट। Further, the proposals are initiated by board and recommend the consideration of company in general meeting। इसका मतलब डायरेक्टर सारा काम कंपनी का करता है। These are the powers given to directors। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी किसी आदमी का पावर आता है उसका कुछ ड्यूटीज आता है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर। व्हाट ड्यूटीज डायरेक्टर मस्ट अंडरटेक। First duty is the duties of the director can be classified into 6 parts। First point is fiduciary duties। What is fiduciary duty? डायरेक्टर कंपनी का मालिक नहीं है, हमेशा उसको याद करना है। डायरेक्टर्स आर द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर कंपनी का ट्रस्टी है, मालिक नहीं है। ट्रस्टी मतलब क्या है, जैसे भगवान के मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में ट्रस्टी होता है, जो उसको उसके पैसे को चलाते हैं, वो हमेशा सोचते हैं ये पैसा मेरा नहीं है, भगवान का है, भगवान के लिए, भगवान के बिहाफ पर मैं इसको चला रहा हूं। इस तरह से डायरेक्टर और कंपनी के बीच में एक फिडुशियरी ड्यूटीज होता है। डायरेक्टर को कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जैसे कि शेयर होल्डर का नुकसान हो। डायरेक्टर्स आर दी ट्रस्टी और गार्डियंस ऑफ द कंपनी। So this is the fiduciary duty of the director। Director has to take due care and skill। Any decisions taken by director, they have to take ample care and skill। Director has a duty to attend board meeting। कंपनी का बोर्ड का जब मीटिंग होगा, डायरेक्टर को उसको अटेंड करना ड्यूटी है उसका। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। डायरेक्टर को जो काम दिया गया है वो किसी और को उनके बिहाफ पर करने के लिए डेलीगेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोल सकता है बोर्ड मीटिंग चल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, किसी और को, बेटे को भेज दिया, बेटी को भेज दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ड्यूटी टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट। किसी मैटर में अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसको पहले डिस्क्लोज करेगा डायरेक्टर। कोई टेंडर आया है तो वहां पर अगर बेटा है, बेटी है, कोई रिलेटिव है, उसका कंपनी है, तो वो सारा इंटरेस्ट वो डिस्क्लोज करेगा दूसरे डायरेक्टर के सामने।
and there are certain statutory duties of the directors. What is statutory duties? Those duties which are given by Companies Act to directors. So what are the statutory duties? First, duty not to allot shares until minimum subscription is raised. मैं बताया था एक कंपनी का, पब्लिक कंपनी का शेयर तभी अलॉट हो सकता है जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज होता है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो क्या करेगा, पैसा वापस कर देना पड़ता है। Then duty to sign annual returns of the company, certificate attached to annual returns of the company. Next, duty to forward statutory report of the company to every member of the company. इसका मतलब statutory report में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सब मिलकर कंपनी का एनुअल रिटर्न या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनता है। ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को डायरेक्टर को उसका सारा मेंबर्स को पास पहुंचाना है। डायरेक्टर हैज ए ड्यूटी टू कॉल ए जीएम, हर साल में मिनिमम एक बार जीएम बुलाना है। जीएम का मतलब जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग का मतलब मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर को एक बार साल में मिनिमम एजीएम बुलाना ही बुलाना है। शेयर होल्डर आएंगे, उनके सामने कंपनी का प्रोग्रेस, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा, क्योंकि दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ड्यू टू कॉल ईजीएम ऑफ ए कंपनी ऑन ए वैलिड रिक्विजिशन, जब भी जरूरत पड़े, जीएम हो गया है फिर भी शेयर होल्डर्स को मीटिंग बुलाना है, उस तरह का मीटिंग को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या ईजीएम। तो एजीएम बुलाएगा और ईजीएम बुलाएगा। दीज आर द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर। ड्यूटी टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी and prepare a director report along with these two cases, and duty to take शेयर क्वालिफिकेशन। मैं बताया था क्वालिफिकेशन शेयर एक किसी किसी कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, एक डायरेक्टर को मिनिमम 5 शेयर रखना है, 10 शेयर रखना है, 50 शेयर रखना है। अगर लिखा हुआ है डायरेक्टर हैज ए ड्यूटी टू बाय दैट शेयर बिफोर बिकमिंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। These are the statutory duty of the directors. बेटा किसी को समझ में नहीं आया बोलो। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्टर के ऊपर आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। एनी डाउट? फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी का मतलब जैसे एक रिलेशन होता है वकील का और उसके क्लाइंट के बीच में, डॉक्टर का पेशेंट के बीच में, द रिलेशन विच इज बेस्ड अपॉन ट्रस्ट। हम डॉक्टर के सामने पूरा नंगा हो जाते हैं, कुछ मतलब हमारे जो भी है हम बता देते हैं, क्योंकि अगर बताएंगे नहीं तो डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। हमारा वकील के सामने हम अगर मर्डर किए हैं तो मर्डरर भी बोल देता है हाँ किया, फिर भी जाकर वो उसको बचाता है। उस तरह से डायरेक्टर हैज टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। हु इज ए सेक्रेटरियल ऑडिट। कभी कभी कंपनी में क्या होता है, कंपनी एक्ट के हिसाब से सारा काम हो रहा है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स बन रहा है या नहीं, उसको देखने के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट किया जाता है। सेक्रेटरियल ऑडिटर कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी होता है, सीएस। ठीक है, एक सीएस को हम अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए। नेक्स्ट, ठीक है, फिर आगे जाते हैं, चलते हैं। बेटा डायरेक्टर खत्म होने के बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और एक आ गया, दैट इज नोन एज मीटिंग। मैं बताया था मीटिंग क्या है, कंपनी मीटिंग क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ये मीटिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मीटिंग।
ना मीटिंग का मतलब क्या है, जब दो से ज्यादा पर्सन एक जगह पर मिलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, मीटिंग चल रहा है। इट इज द gathering or assembling or coming together of two or more person for the transaction of some lawful business is called meeting। ठीक है, सो व्हाट इज ए मीटिंग, एनी गैदरिंग, असेंबली और कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ सम lawful business or concern is called meeting। नाउ एक कंपनी में अगर कंपनी के रिलेटेड कुछ लोग एक साथ आकर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लॉफुल बिजनेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं मीटिंग। सो उसको बोलेंगे कंपनी मीटिंग। तो कंपनी मीटिंग क्या है पहले डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ए कंपनी मीटिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी मीटिंग। एक कंपनी में मीटिंग क्या है, ओके। फर्स्ट, कंपनी मीटिंग होने के लिए ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर होना चाहिए। First, a company meeting, except where it is otherwise specified, is a get together of two or more person who are members of the company। एक कंपनी का मेंबर्स दो या ज्यादा पर्सन अगर मिले उसको बोलते हैं कंपनी मीटिंग। The members meet together for discussing and taking decision of some lawful business। इसका मतलब वो जो लोग मिलेंगे कुछ डिसीजन लेने के लिए, जैसे चाय पीने के लिए दो तीन लोग मिले, दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज कंपनी मीटिंग। कुछ डिसीजन लेंगे, कौन सा डिसीजन, कोई लॉफुल बिजनेस के लिए डिसीजन, कोई इलीगल डिसीजन नहीं। पांच लोग मिलकर एमडी का पैर तोड़ देंगे, एक मीटिंग किए, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज कंपनी मीटिंग। चेयरमैन का सर फोड़ेंगे, दैट इज नॉट ए लॉफुल बिजनेस। कोई लॉफुल बिजनेस करने के लिए अगर क्या होगा, कोई डिस्कशन हो रहा है कंपनी में, दो या उससे ज्यादा मेंबर्स मिलकर, उसको बोलेंगे मीटिंग। बेटा जब भी मीटिंग होगा, इससे दो तीन लोग मिलकर मिल गए तो मीटिंग हो गया नहीं। मीटिंग होने से पहले हमको मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा। बिना नोटिस का कोई मीटिंग नहीं हो सकता है। नोटिस मतलब एक इनविटेशन, ये जगह पर मीटिंग होगा, इतने बजे मीटिंग होगा, इसका एजेंडा ये होगा, इस मीटिंग में ये चीज डिस्कशन होगा। तो बिना नोटिस का कोई मीटिंग नहीं हो सकता है कंपनी में। A meeting is to be held at a specified place and time। कहां पर मीटिंग होगा, कब मीटिंग होगा, ये मेंशन होना चाहिए। कहां पर, नोटिस में। नोटिस क्या है, नोटिस में पहले बताया जाता है इट्स एन एडवांस इंटीमेशन रिगार्डिंग द मीटिंग। जहां पर बताया जाएगा कहां पर मीटिंग होगा, कब मीटिंग होगा, किस डेट में मीटिंग होगा, ये मीटिंग और उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा। ए मीटिंग इज हेल्ड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। तुम अपने आप मीटिंग नहीं कर सकते हो। मीटिंग जब भी होगा कंपनी का मीटिंग, कंपनी एक्ट का सारा प्रोविजन तुमको मानना पड़ेगा। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी मीटिंग। नेक्स्ट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग। कंपनी में कितने तरह का मीटिंग होता है। नॉर्मली कंपनी मीटिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स। फर्स्ट, थ्री या फोर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स मीटिंग। कंपनी का शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स मीन्स ओनर, जब भी मीटिंग करते हैं उसको बोला जाता है शेयर होल्डर्स मीटिंग, या उसको बोला जाता है जनरल मीटिंग। बेटा समझ में आ रहा है, शेयर होल्डर का मीटिंग को भी हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, या इसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। जब भी कंपनी का डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है हम उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। शेयर होल्डर का मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। क्रेडिटर्स भी अपना मीटिंग कर सकते हैं। क्रेडिटर्स मतलब कंपनी को जो उधार दिए हैं। डिबेंचर होल्डर्स भी अपना मीटिंग कर सकते हैं। इसमें से दो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शेयर होल्डर्स का मीटिंग और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग। पहले हम बात करेंगे किसका मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स कौन है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स जो मीटिंग करते हैं उस मीटिंग को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट एनुअल जनरल मीटिंग,
जिसको हम बोलते हैं एजीएम। ये साल में एक बार होता है। फिर ये मीटिंग होने के बाद कोई इंपॉर्टेंट मैटर आ गया, उसको डिस्कशन करने के लिए अगर शेयर होल्डर का और एक मीटिंग बुलाना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये इसको बोलते हैं ईजीएम। अगर सारा शेयर होल्डर का मीटिंग ना होकर कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स का मीटिंग हुआ, उसको बोलेंगे क्लास मीटिंग। जैसे मैं बताता, स्मॉल शेयर होल्डर्स मीटिंग। मुझे स्मॉल शेयर होल्डर कल बताया था, 20,000 रुपए का कम शेयर जिसके पास है उसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर। वो अपना डायरेक्टर को चुनना चाहते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो वो क्या करेंगे, एक क्लास मीटिंग करेंगे जहां पर सब शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे। ओनली दो शेयर होल्डर्स व्हिच हैव शेयर्स बिलो 20,000 दे विल कम, and that will be a small shareholders meeting, and that is a class meeting. तो मीटिंग तीन तरह का, शेयर होल्डर का मीटिंग, एजीएम, ईजीएम, क्लास मीटिंग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एजीएम क्या है। एजीएम क्या है? दिस इज द एनुअल रिचुअल ऑफ द कंपनी। हर एक कंपनी को साल में एक बार एक मीटिंग करना पड़ता है अपना सारा शेयर होल्डर्स को लेकर, जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। इस मीटिंग में सारा शेयर होल्डर्स आते हैं। वहां पर डायरेक्टर्स एक रिपोर्ट पढ़ते हैं, ये साल में हम आपके पैसा लेकर क्या क्या किए और आगे हम क्या करना चाहते हैं, अपना विजन, मिशन और क्या क्या किए हैं, अचीवमेंट, वो सब पढ़ा जाता है। और इन प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिस्कशन होता है और डिसाइड होता है प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर डिविडेंड करके लेंगे। तो डिविडेंड का डिसीजन कहां पर होता है? एजीएम में होता है। So this is the annual ritual of the company. Every company must hold in each year a general meeting, which is termed as annual general meeting. ये एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है? एक मीटिंग में जो होता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस मतलब मैटर्स डिस्कस्ड इन ए मीटिंग। सो व्हाट आर द बिजनेस ट्रांजैक्टेड इन एन एनुअल जनरल मीटिंग? एक मीटिंग एजीएम में कौन कौन सा बिजनेस और कौन कौन सा मैटर डिस्कस होगा? In a annual general meeting of a company, two type of business are discussed. What are the two type of business? One is known as general business or ordinary business. Another is known as special business और स्पेशल बिजनेस। बेटा यहाँ पर बिजनेस का मतलब दुकान नहीं है, बिजनेस का मतलब मीटिंग के कॉन्सेप्ट में बिजनेस मीन्स मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग, दैट इज नोन एज बिजनेस। ये बिजनेस दो तरह का है, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। एक एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस हो सकता है, स्पेशल बिजनेस डिस्कस हो सकता है। सो व्हाट आर द ऑर्डिनरी बिजनेस और जनरल बिजनेस? जनरल बिजनेस एक कंपनी का चार होता है, चार को छोड़कर बाकी जितना डिसीजन सब स्पेशल बिजनेस, बाकी सारा मैटर स्पेशल बिजनेस है। तो व्हाट आर द ऑर्डिनरी मैटर्स जो एजीएम में डिस्कस होगा ही होगा? फर्स्ट, डिस्कस द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल का अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, इन सब के ऊपर डिस्कशन को बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। दिस इज द फर्स्ट बिजनेस टू बी कंडक्टेड इन एजीएम। फिर सेकेंड ऑर्डिनरी बिजनेस इज टू डिक्लेयर द डिविडेंड फॉर द ईयर। इस साल कितना डिविडेंड लिया जाएगा उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। फिर टू अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स टू रिप्लेस दोज हु रिटायर बाय रोटेशन। नॉर्मली एक कंपनी में डायरेक्टर रोटेशन में रिटायर होते हैं, कुछ डायरेक्टर जाते हैं, कुछ नया डायरेक्टर आते हैं। तो कौन जाएगा कौन आएगा इन सब के ऊपर डिस्कशन कहां पर होता है? जनरल बिजनेस, एजीएम में होता है। देन कंपनी का ऑडिटर कौन होगा? कौन सा ऑडिटर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। हर एक कंपनी को एक ऑडिट करना पड़ता है, एनुअल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो कौन होगा? उसका अपॉइंटमेंट एजीएम में होगा एंड इट इज ए पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस।
ऑर्डिनरी बिजनेस 4 ही है। पहला बिजनेस क्या है? पहला बिजनेस कंपनी का फाइनल अकाउंट के ऊपर डिस्कशन, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिस्कशन, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन। सेकंड है डिविडेंड कितना दिया जाएगा उसके ऊपर डिस्कशन। थर्ड है नया डायरेक्टर कोई आएगा, पुराना कोई जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन। और कंपनी का ऑडिटर कौन होगा उसके बारे में डिस्कशन। ये सारा 4 चीज ऑर्डिनरी बिजनेस से ये हमेशा कंपनी का एजीएम में डिस्कस होता है। इसके अलावा कोई और चीज आ गया जिसके ऊपर डिस्कशन करना है, उसको बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस में क्या होता है? स्पेशल बिजनेस में ये चारों को छोड़कर और कुछ भी हो सकता है, जैसे अपॉइंटमेंट, रिन्यूअल, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इंक्रीजिंग कंपनी शेयर कैपिटल, ऑल्टरिंग कंपनीज आर्टिकल। दीज आर मेनी स्पेशल बिजनेसेस। तो जनरल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। लेकिन एजीएम होने से पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। ये नोटिस में आप एजीएम होने का 21 दिन पहले नोटिस देंगे। 21 डेज क्लियर नोटिस। मतलब एजीएम होने से 21 दिन पहले आपको शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा, इस डे में हमारा एजीएम होने वाला है, इस जगह पर, इस टाइम पर आपको इनविटेशन रहा, आप आकर इसमें क्या कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, आपका कंपनी है। ठीक है? तो बिना नोटिस, और ये नोटिस में एक एजेंडा रहेगा। एजेंडा का मतलब इसमें क्या क्या डिस्कशन होगा। हमेशा पहला डिस्कशन होगा ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस पहला डिस्कशन रहेगा। इसके बारे में डिस्कस होने के बाद क्या डिस्कस होगा? स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस 4 है, ABCD, ये डिस्कस होगा ही होगा। उसके बाद में क्या डिस्कशन होगा? वो स्पेशल बिजनेस डिस्कशन होगा। वो नोटिस में लिखा जाएगा, ये मैटर डिस्कशन होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, these are the 2 type of things which must be followed in case of AGM, annual general meeting। बेटा कितना दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 21 डेज नोटिस। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मीटिंग, EGM। व्हाट इज EGM? EGM का मतलब क्या है? नॉर्मली कभी कभी कंपनी का एजीएम हो गया है। एजीएम सपोज आपके कंपनी का एजीएम हो गया 15 जून को, 15 जून को आपका एजीएम हो गया। फिर 2 महीने जाने के बाद कुछ ऐसा मैटर आ गया जिसमें शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाना जरूरी है। उस टाइम में आप तो एजीएम बुला नहीं सकते हैं, एजीएम साल में एक बार होगा। तो एक एजीएम होने के बाद दूसरे एजीएम होने तक बीच में अगर कहीं पर शेयर होल्डर को बुलाने की जरूरत पड़ता है, कोई मीटिंग बुलाया जाता है, उस मीटिंग को हम बोलते हैं EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। EGM में क्या डिस्कस होगा? EGM में हमेशा स्पेशल बिजनेस ही डिस्कस होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस का डिस्कशन सिर्फ कौन सा मीटिंग में होता है? एजीएम। स्पेशल बिजनेस आर डिस्कस्ड इन EGM। EGM में भी आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे ये EGM में क्या डिस्कस किया जाता है। ऑलवेज स्पेशल बिजनेस आर डिस्कस। क्या हो सकता है? ऑल्टर द कंपनीज मेमो एंड आर्टिकल। आपको कंपनी का मेमो आर्टिकल को बदलना है, एजीएम हो गया है तो EGM बुलाइए। अगर आपको कोई फ्रेश डिवेंचर इशू करना है, आपको आपका कंपनी का कैपिटल इंक्रीज, डिक्रीज या रिड्यूस करना है, तो आप क्या बुलाइए? EGM बुलाए। एनी अदर अर्जेंट मैटर आ गया है, EGM बुला सकते हैं। नॉर्मली ये EGM कौन बुला सकता है? नॉर्मली कंपनी में EGM 3 पार्टी बुला सकते हैं। पहला पार्टी बुला सकता है डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर EGM बुला सकता है। सेकेंड, डायरेक्टर ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट, थर्ड, बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ। फोर्थ, बाय NCLT। ये क्या है? पहला
कंपनी का डायरेक्टर बुला सकता है। मैं बताया था डायरेक्टर हमेशा कोई इंपॉर्टेंट मैटर डायरेक्टर को लेना है डिसीजन, जिसके लिए शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, ईजीएम बुला सकता है। लेकिन सपोज एक बार एजीएम हो गया, एजीएम होने के बाद हमको पता चला ये डायरेक्टर लोग बहुत सारा घपला किए, ठीक है, तो हम बोलते हैं, हम शेयर होल्डर में से कुछ लोग मिलकर जाकर डायरेक्टर लोगों को बोलेंगे तुम तुरंत क्या बुलाओ और एक मीटिंग बुलाओ, ईजीएम बुलाओ। समझ में आ गया? तो हम एक एप्लीकेशन लेकर जाएंगे डायरेक्टर्स के पास, और उस एप्लीकेशन में हम बोलेंगे ये एप्लीकेशन है, तुम तुरंत ईजीएम बुलाओ। तो वो एप्लीकेशन कौन दे सकता है? कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट में वो मेंबर्स दे सकते हैं जिनके पास मिनिमम 10% ऑफ द कंपनीज कैपिटल है या राइट टू वोट है। आपके पास अगर कंपनी का 10% है, आपके पास नहीं है, तो 5 लोग मिलकर, मेरे पास 2% है, उसके पास 1% है, उसके पास 3% है, हम सब मिल जाएंगे। मिलने के बाद क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलेंगे हम चाहते हैं और एक ईजीएम तुरंत बुलाओ। ओके, सो आपको 10% वोटिंग राइट होना चाहिए, या नहीं तो 10% शेयर कैपिटल आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिक्विजिशन दे सकते हैं। किसको रिक्विजिशन देंगे? रिक्विजिशन मतलब एप्लीकेशन। किसको रिक्विजिशन देंगे? डायरेक्टर को बोलेंगे एक ईजीएम बुलाओ, और ईजीएम में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करेंगे। ये सब घपलाती हुआ है, हमको लग रहा है, पूरा डायरेक्टर शेयर होल्डर्स आएंगे, तुम्हारा हिसाब करेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टर कुछ घपलाती नहीं किया है, इनका एप्लीकेशन रखने के बाद वो क्या करेगा, कुछ दिन के बाद 45 डेज के अंदर उसको क्या बुलाना है, ईजीएम बुलाना है। ही इज बाउंड टू कॉल, ठीक है। अगर ईजीएम 45 डेज हो गया, वो बुलाया नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो रिक्विजिशनिस्ट हैं, जो एप्लीकेशन दिए थे, वो लोग खुद एक ईजीएम बुला देंगे। बात समझ में आ गया? एंड दैट विल बी ए वैलिड ईजीएम। नोटिस देना पड़ा, सब कुछ करेगा, वहां पर तो डायरेक्टर्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो लोग घपलाती किए हैं, वो पकड़ा के जाएंगे, उनके लिए डर के मारे वो लोग नहीं आएंगे। तो ये रिक्विजिशनिस्ट, हम लोग खुद मालिक हैं, हम लोग दूसरे मालिक को बुलाएंगे और वहां पर मीटिंग बुलाएंगे। पहला काम करेंगे, ये डायरेक्टर क्या क्या घपलाती किया है उनके बारे में सारा चिट्ठा खोलेंगे और वहां पर मीटिंग करेंगे। अगर चाहे सब लोग राजी हुए, ये डायरेक्टर को निकालेंगे, नया डायरेक्टर को बिठाएंगे, इनको ऑफिस से निकालेंगे। ये हो सकता है। लेकिन ये काम करने के लिए तुमको पता होना चाहिए, तुम्हारे पास में या तुम जितने लोग मिले हो उन सबके पास में कितना परसेंट शेयर कैपिटल होना चाहिए, 10%, या 10% वोटिंग राइट होना चाहिए। मेरे पास 5 शेयर है, मैं जाऊंगा बोलूंगा रिलायंस का ईजीएम बुलाओ, ईजीएम बुलाओ। अरे रिलायंस में 10 लाख शेयर से मेरे पास 5 शेयर है, नहीं होगा, मिनिमम 10%। अगर मेरे पास 5 शेयर हैं, मैं तो रिक्विजिशन नहीं दे सकता हूं, अपने आप डायरेक्टर को पास अप्लाई नहीं कर सकता हूं, और खुद ईजीएम नहीं बुला सकता हूं। उस केस में मेरे पास सिर्फ 5 शेयर है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये डायरेक्टर कुछ गपलाती कर रहे हैं। देयर आर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी। क्या हो रहा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का राइट ऑपरेस हो रहा है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कंपनी में हो रहा है। अगर ये है, मेरे पास 10% नहीं है, फिर भी मैं क्या करूंगा, ईजीएम बुलाने के लिए तुरंत जाऊंगा किसके पास, कोर्ट के पास। एक कंपनी कोर्ट को बोलते हैं एनसीएलटी, कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी के पास जाऊंगा अपना केस लेकर, भैया मेरे पास 5 ही शेयर है, लेकिन मेरे पास ये प्रूफ है, इस कंपनी में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है। मेरे पास अगर 10% शेयर होता, मैं डायरेक्टर को बोलता, या नहीं तो खुद मिलकर
ईजीएम बुला लेता, लेकिन मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास पक्का प्रूफ है यहाँ पर घपलाती हो रहा है। तो एनसीएलटी वो सारा डॉक्यूमेंट्स को देखेगा और डायरेक्टर्स को पूछेगा ये हो रहा है, तुम्हारा रिप्लाई दो। फिर वहां पर कोर्ट में केस होगा। अगर डायरेक्टर के अगेंस्ट में गया, कोर्ट ऑर्डर देगा इस कंपनी का क्या बुलाओ, ईजीएम बुलाओ, और ईजीएम बुलाकर इस डायरेक्टर के जो सब काम किए हैं इसके बारे में ये आदमी बताएगा। फिर वहां पर जो डिसीजन होगा वो कंपनी के शेयर होल्डर्स लेंगे। तो ईजीएम कौन बुला सकता है, मैं बता दिया। ईजीएम नॉर्मली ईजीएम डायरेक्टर बुलाता है, या नहीं तो अगर आपके पास 10% या उससे ज्यादा शेयर है, आप एक एप्लीकेशन लेकर डायरेक्टर के पास जाएंगे और वो एप्लीकेशन पढ़कर डायरेक्टर 45 डेज के अंदर क्या बना देगा, ईजीएम बुला देगा। अगर वो 45 डेज क्रॉस हो गया, डायरेक्टर आपका बात नहीं सुनता है, आपके पास 10% शेयर है, आप खुद मीटिंग बुला सकते हैं, नोटिस देना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास वो नहीं है लेकिन पक्का प्रूफ है कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो आप उस सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। एनसीएलटी उसको वेरीफाई करने के बाद आपके बिहाफ पर एक ऑर्डर देगा कंपनी को, ईजीएम बुलाओ। दिस इज नोन एज ईजीएम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बेटा किसी को डाउट रहा एजीएम और ईजीएम में? एनी डाउट? AGM or EGM, AGM and EGM are बेटा कोई एनसीएलटी, एनसीएलटी जैसे हमारे यहाँ पर कोर्ट होता है ना, कंपनी मैटर को सुनने के लिए एक स्पेशल कोर्ट गवर्नमेंट बनाया है जिसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आप अगर एनसीएलटी में केस फाइल करेंगे तो वो एक कोर्ट है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। उसका जो ऑर्डर होगा उसमें अगर आपको पसंद नहीं है, आपको उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट जा सकते हैं और कहीं पर नहीं जा सकते। एनसीएलटी के अगेंस्ट में हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। कंपनी मैटर के लिए कंपनी का कोर्ट, जैसे फैमिली मैटर के लिए फैमिली कोर्ट है, कंपनी मैटर के लिए एनसीएलटी है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए डायरेक्टर? हाँ, बेटा डायरेक्टर दो तरह का होते हैं, एक होता है रोटेशनल डायरेक्टर और एक होता है नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। तो डायरेक्टर 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, उसमें से 1/3 क्या होते हैं, रोटेशन करेंगे हर साल। नेक्स्ट, any other person in AGM, shareholders and board of directors, any other person in AGM? बेटा ईजीएम में और कौन बुला, ईजीएम और कोई नहीं बुला सकता है, डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स। और कोई बुलाना चाहता है तो एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा प्रूफ लेकर। इफ देयर आर एनी पेपर वर्क फॉर रिटायरमेंट, यस पेपर वर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, तो एजीएम गया, ईजीएम गया। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इज क्लास मीटिंग। व्हाट इज क्लास मीटिंग? रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कितना डायरेक्टर रोटेट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में मेंबर एक बार अपॉइंट हुए, 5 साल बाद सब जाएंगे, फिर नए आएंगे। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और उसमें से कुछ जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी की तरह है। लोकसभा एक बार खत्म हो जाता है फिर बनता है। लेकिन कंपनी का बोर्ड भी एक परमानेंट जैसा है, वहां पर कुछ लोग जाते हैं, कुछ आते हैं, कुछ आते हैं आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता एक साथ सारा बोर्ड मेंबर्स चले जाएंगे, नया बोर्ड आएगा। नेक्स्ट, क्लास मीटिंग। व्हाट इज क्लास मीटिंग? जब भी कंपनी में शेयर होल्डर में से कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर का मीटिंग होता है, उसको बोलते हैं क्लास मीटिंग।
जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था, स्मॉल शेयर होल्डर्स मिलकर मीटिंग किए, तो उसको बोलते हैं क्लास मीटिंग, जहां पर सब शेयर होल्डर्स आएंगे नहीं, सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर्स आएंगे, इट इज ए केस ऑफ क्लास मीटिंग। नेक्स्ट मीटिंग इज बोर्ड मीटिंग। व्हाट इज बोर्ड मीटिंग? बेटा बोर्ड मीटिंग जब भी कंपनी में कोई डिसीजन लिया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डिसीजन लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे डिसीजन लेंगे? मीटिंग करेंगे। मीटिंग करेंगे तो पहले नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देना पड़ेगा, यहां पर 21 दिन नहीं है, यहां पर नोटिस थोड़ा कम होगा, 7 डेज नोटिस, इंपोर्टेंट मैटर के लिए। और ये नोटिस उनको दिया जाएगा। फिर वहां पर क्या होगा? बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आकर मीटिंग करेंगे। उस तरह का मीटिंग को हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। ओके, इंटरनल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई काम नहीं है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को तो नोटिस देना पड़ेगा। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिलकर हमेशा डेली 5-8 मीटिंग करते हैं, वो मीटिंग स्पेशल टाइप ऑफ बोर्ड मीटिंग बोल सकते हैं हम। लेकिन बोर्ड मीटिंग ऐसा होता है जहां पर क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को आने के लिए तो टाइम चाहिए, मिनिमम 7 डेज नोटिस आपको देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग में हम क्या करते हैं, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आकर मीटिंग करते हैं। और ये मीटिंग, बोर्ड मीटिंग दो तरह का होता है, जहां पर सारा बोर्ड मेंबर रहते हैं, इसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन तुम बोलोगे डेली मैटर देखने के लिए सब बोर्ड में ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं चाहिए, 4-5 डायरेक्टर्स मिलकर एक कमिटी बनाएंगे, तो इसको देयर कैन बी डायरेक्टर्स कमिटी बोर्ड मीटिंग। तो दो तरह का बोर्ड मीटिंग हो सकता है, एक जनरल बोर्ड मीटिंग जहां पर सब डायरेक्टर आते हैं, एक होता है कमिटी बोर्ड मीटिंग। जैसे ये कोई बोल रहा था सर इंटरनली हमारा 4-5 डायरेक्टर मिलकर बात करेंगे, दैट इज कमिटी बोर्ड मीटिंग। अगर सब डायरेक्टर्स आएंगे तो ही उसको बोला जाता है बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग, कमिटी बोर्ड मीटिंग अलग है। बोर्ड मीटिंग मतलब सारा डायरेक्टर आएंगे, नोटिस दिया जाएगा 7 डेज। कमिटी बोर्ड मीटिंग उससे कम डेज में, नोटिस बाय रोटेशन में भी कमिटी बोर्ड मीटिंग हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? दो तरह का मीटिंग, जनरल बोर्ड मीटिंग, कमिटी बोर्ड मीटिंग। ओके, नेक्स्ट क्रेडिटर्स मीटिंग। अगर कंपनी का क्रेडिटर्स लोग मिलकर कोई मीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स मीटिंग। ओके, हाउ ऑफन एंड हु डिसाइड्स सीएमडी और डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग? बेटा मीटिंग को कौन डिसाइड करेगा? जब भी कोई मीटिंग होगा, वो मीटिंग को हेड करने वाला कोई रहेगा, उसको बोलते हैं चेयरमैन। सो चेयरमैन हेड ए मीटिंग। तो मीटिंग बुलाने का राइट किसके पास में है? चेयरमैन। द मीटिंग इज टू बी कॉल्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। बेटा समझ में आ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट कन्वेनिंग अथॉरिटी। हमेशा याद रखो, देयर आर सर्टेन एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए मीटिंग, दैट इज नोन एज वैलिडिटी मीटिंग ऑफ ए मीटिंग। ये सब फीचर्स फुलफिल होगा तो जाकर मीटिंग वैलिड होगा, अगर ये सब नहीं है तो मीटिंग वैलिड नहीं हो सकता है। फर्स्ट, कन्वेनिंग अथॉरिटी। मीटिंग बुलाने, जो आदमी मीटिंग बुला सकता है वो ही बुलाएगा, कोई दूसरा बुलाएगा तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा। बेटा एजीएम कौन बुलाएगा? एजीएम इज डायरेक्टर्स बुलाएंगे। ईजीएम कौन बुला सकता है? ईजीएम कौन बुलाएगा? मैं बताता, 4 पार्टी होते हैं, डायरेक्टर, रिक्विजिशन ऑन एप्लीकेशन, रिक्विजिशन इटसेल्फ, एनसीएलटी। क्लास मीटिंग कौन बुलाएगा? डायरेक्टर्स बुलाएंगे। यही अगर मीटिंग बुलाएंगे तो जाकर मीटिंग वैलिड होगा। अगर कन्वेनिंग अथॉरिटी नहीं होगा मीटिंग में तो मीटिंग नहीं हो सकता है। हर एक मीटिंग बुलाने से पहले क्या देना पड़ेगा? नोटिस। ये नोटिस क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं बताया था 21 दिन का नोटिस कहां पर होता है? एजीएम में।
बोर्ड मीटिंग में कितना दिन का होता है? 7 डेज नोटिस देना पड़ेगा। ओके, नोटिस देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, हर एक मीटिंग में एक कोरम होना चाहिए। व्हाट इज कोरम? व्हाट इज कोरम? कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स to be present to make a meeting valid। आप मीटिंग बुलाए, कितने लोग आएंगे तो जाकर हम मानेंगे वो मीटिंग में कोरम है। अगर कोरम नहीं होगा वो मीटिंग वैलिड नहीं होगा। जैसे कोई जनरल मीटिंग है, अगर प्राइवेट कंपनी है, कोरम है 2, पब्लिक कंपनी है, कोरम है 3। तो कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोरम नहीं है तो क्या नहीं हो सकता है? वो मीटिंग वैलिड नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, सो कोरम मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, हर एक मीटिंग का कोरम अलग अलग है। बोर्ड मीटिंग का अलग है, ये मीटिंग का अलग है। नेक्स्ट, चेयरमैन। मैं बताया था हर एक मीटिंग जब भी होगा उस मीटिंग को लीड करने वाला कोई आदमी रहेगा, उसको बोलते हैं चेयरमैन। विदाउट चेयरमैन एनी मीटिंग इज नॉट वैलिड। चेयरमैन प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। अगर कोई मीटिंग बुलाया गया है, वहां पर चेयरमैन मेंशन नहीं है, तो क्या किया जाएगा? सब मेंबर पहले आएंगे, फास्ट मैटर डिस्कस होगा, कौन चेयरमैन होगा। फिर चेयरमैन सिलेक्ट हो गया, वो चेयर पर बैठेगा, फिर जाकर मीटिंग शुरू होगा। चेयरमैन प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। नॉर्मली जो बोर्ड मीटिंग होता है उसको चेयर कौन करता है? उसको जो चेयर करते हैं हम बोलते हैं सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर चेयर करता, चेयरमैन एंड सीएमडी। ठीक है, नेक्स्ट, सो चेयरमैन इज द पर्सन हु प्रिजाइड ओवर ए मीटिंग। एक मीटिंग में जो जो मैटर डिस्कस हुआ उसको लिखना पड़ता है। कहां पर लिखेंगे? एक किताब होता है, वहां पर एक कॉपी होता है, वहां पर लिखा जाएगा इस डेट में मीटिंग हुआ और मीटिंग में ये मैटर डिस्कस हुआ और ये रिजोल्यूशन या डिसीजन पास हुआ। उसके नीचे कौन साइन करेगा? चेयरमैन साइन करेगा। एवरी कंपनी मीटिंग देयर मस्ट बी ए मिनट kept for each meeting। minute is the proceeding of the meeting। मिनट क्या है? प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। इसको सिग्नेचर कौन करेगा? लास्ट में चेयरमैन का सिग्नेचर होगा, तो जाकर ये मिनट्स वैलिड होगा। बिना मिनट्स का कोई मीटिंग वैलिड नहीं हो सकता। बेटा समझ में आ रहा है क्या? दीज आर सर्टन एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए कंपनी मीटिंग। अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, किसी को कोई डाउट है 1-2 मिनट हम डिस्कस करें। हाँ बोलिए। सर, हाँ बोलिए। चेयरमैन कोन परमानेंट रे ना एमती टेम्पररी एवरी मीटिंग रे सिलेक्ट करे पड़े? प्रति मीटिंग रे गोटे चेयरमैन रहबो। प्रति मीटिंग एमती परमानेंट न थाए। जो मीटिंग रे चेयर ऊपर जी बसिला सी हला चेयरमैन। माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भितरु जणे लोक हबो? नहीं सेमती किछ मान नहीं। शेयर होल्डर का मीटिंग हो मने करो, आमे प्रथम डिसाइड करबो मन का स्मॉल शेयर होल्डर्स को मीटिंग होउची, के चेयरमैन हबो ताका भितर जणे का चेयरमैन करेबो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग रे नॉर्मली कंपनी रो चेयरमैन ताको हेड करे। मन ता देह खराब ही जेची से मीटिंग ता हबोनी, जी चेयरमैन हुए ता देह खराब ही जेची ताले मीटिंग हबो ना? नहीं मीटिंग हबो। मीटिंग हैला माने कोन दरकार? चेयरमैन दरकार। प्रथमे से जेति लोक आसीचंती से मान डिसाइड करिवे आज रो मीटिंग पई ये चेयर रे बसिबो, तले सी चेयरमैन हे होला। सी मीटिंग रो मिनिट्स हैला परे ता दस्खत बाजिला परे से मिनिट्स गुडा को वैलिड हैला। सर चेयरमैन और सीएमडी कोन सेम लोक अपन कहली? बेले बेले हेई थाती,
चेयरमैन माने जी चेयर रे बसला मीटिंग रे CMD बेले प्राय टाइम सीएमडी बसंती तेनु सीए ही जानती चेयरमैन ओके सर थैंक मीटिंग पे Hello. चेयरमैन माने जी चेयर रे बसला हु प्रिजाइड द मीटिंग दैट ही इज द चेयरमैन सर हाँ सर बोर्ड मीटिंग रे जदि चेयरमैन न बसुचंती जे हमर जदि एमडी न बसुचंती बोर्ड मीटिंग नहीं जे कौन सी मीटिंग रे चेयरमैन नथिले से मीटिंग टा वैलिड नुहे चेयरमैन जदि माने जे प्रिजाइड जे- करियो मीटिंग को हाँ जदि एमडी एब्सेंट थिबे अरे एमडी धरा तू से मीटिंग रे जे चेयर रे बसला तो से चेयरमैन हेला आ से दिन ସେଇ पे ମୋ से क्वेश्चन ହଉଛି ସେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଟା ସେଟା ସେଇ କାହାକୁ ଦେବାଟା आप ଠିକ अन्य ରହିବ? माने से जो माने मेंबर आस्थिबे से माने डिसाइड करिवे आज रो मीटिंग पई चेयरमैन की हबो ओके जेमते तम क्लास रो मॉनिटर एब्सेंट थिले से दिन कोन क्लास रे मॉनिटरिंग होउनी तुम माने डिसाइड कर दो आज पई ये मॉनिटर से मॉनिटर गोटे परमानेंट मॉनिटर अछि बेले बेले अलगा लोक भी ता जगह नहीं जाए ସେଇଟା ବି ଟିଚର ଡିସାଇଡ କରନ୍ତି ନା ମନିଟର କିଏ ହବ ନେକ୍ସଟ ମନିଟର अरे तुम कॉलेज रे टीचर केबे डिसाइड करते नहीं मॉनिटर केबे हो तुम ताले मॉनिटर केबे डिसाइड करिनो देखिनो वोट दिया जाए कॉलेज फॉलेज रे क्लास रिप्रेजेंटेटिव किए हबो से टीचर डिसाइड करती वोट वोट हुए ओके थैंक यू आउ कोन सर कंपनी जेତେବେଳେ ନିଜେ ଇନସଲଭେନ୍ସି ରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ କଣ ନିଜେ ଏନସିଏଲଟି ରେ ଆପ୍ରୋच କରିପାରିବ? हम काली पढ़ेबी केमती कंपनी बंद हबो ताको आज वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मु पढ़ेबी काली हो आउ कहार किछ अछि जदि पचारंतु सर को मीटिंग गुडा मैंडेटरी हबो गोटे नॉन लिस्टिंग कंपनी लगी सुनंतु कोन मैंडेटरी मीटिंग हैला प्रथम मीटिंग मैंडेटरी एजीएम हबा को बाध्य अच्छा सर नॉन लिस्टिंग कंपनी लगी कोन अछि और लिस्टिंग कंपनी लगी कोन अछि लिस्टेड नॉन लिस्टेड अनलिस्टेड जे कौन से कंपनी हो एजीएम इज मैंडेटरी आ बोर्ड मीटिंग तो नहले से कंपनी चली परिबने आ कोन अच्छा वर्ष को गोटे बोर्ड एजीएम कंपलसरी तीनटा बोर्ड मीटिंग कंपलसरी नल तम कंपनी चालुनी अच्छा सर ए विषय को जो होची एबे न बहुत दिन पूर्व मीटिंग्स रो ट्रांसक्रिप्ट गुडा रखियो हुए सेटा कोन मैंडेटरी मिनिट्स कहली परा मिनिट्स ऑफ द मीटिंग माइन्यूट्स भी कहते ताको केते लोक प्रोनाउंस करते मिनिट्स अच्छा सेटा कोन सब स्टेक होल्डर पाकु जे एब्सेंट रहला तांका पाकु पठेवा मैंडेटरी माने समस्त कम्युनिकेट होवा दरकार सेटा मैंडेटरी नहीं आपण से मिनिट्स ता गोटे कंपनी रो बुक्स ताको जे चाहिबो सी आसिके देखि परिबो अच्छा ता पाखु पठेबोगे थैंक यू सर ओके थैंक यू ऑल थैंक यू थैंक यू यू सर सर मु काहाकू जनंकू कर दी जाउची होस्ट सार आसले ताकू क्लास नेबे कि अभिलिप्सा तुमको असाइन कर देबी मेक होस्ट अभिलिप्सा बर्तन होस्ट मु चल विश्व सर सरीगला ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर नमस्कार सर नमस्कार ये रश्मि मैडम किसी सर्कुलेट कले की नाइ सर कर हां करना मॉर्निंग रे करते ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର
मॉड्यूल 1 2 रो शेयर कर देई पीडीएफ टा एई आउ टिके आगु विशेष समय है नहीं से करिवे बोली कहिसंती आ काली मॉर्निंग रे गोटे क्लास अछि आ पर दिन भी मॉर्निंग रे क्लास अछि एसीजी क्लास ता सेटा जानलेनी କାଲି sir. କାଲି ସକାଳେ ସେଇଟା- ତ ଅଛି ସାର୍। हाँ Sir, काली group ରେ- 7 काली 7 ରୁ 8 ଆଉ पर दिन 9 ରୁ 10:30 एमती हो ନାଇଁ ସାର୍ ପରଦିନ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ସେଇଆ ମୁଁ କହୁଛି ଓହୋ ଠିକ ଠିକ ଆସିନି କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ। କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇବି। ଆମେ ମଡ୍ୟୁଲ 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେଟା ମନେ ଅଛି ତ ବୋଲେ ମଡ୍ୟୁଲ 3 ପଢିବା ବୋଲି ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ମ ତ ମନେ ନାହିଁ ତା ମାନେ ଦେଖାଗଲା ଭିଜିବୁଲ ହେଲା yes ସାର୍ ହଉ Yes, sir. Visual. मॉड्यूल 3 रे अछि एजेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ शेयर होल्डर्स then investors problem and protection corporate governance and other stakeholders board of directors and auditors banks and corporate governance एजेंट माने कौन हमें पढ़ीचे The agent man is a representative of a company to fill the gap so between the customer. when you are say subject as the corporate governance रे use है agents and institution in corporate governance एठी agent माने हला agent mediator who implements the corporate governance and we will also read institutions who are responsible or who make corporate governance happen so ये दीटा जिनस हमें पढ़िबा सेइथरे ए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर माने सब आसी then shareholder rights and privilege oh, who is a investor and who is a shareholder दीटा को समान ना लगा अलग सर काहे कि जे क्रेडिटर sir, से भी गोटे इन्वेस्टर किंतु जे शेयरहोल्डर से इन्वेस्टर नो sir, shareholder owns the company, Yes, sir. but investor is not shareholder the owner of the company. हाँ हाँ सेटा ठीक ओनर जे ओनर टा इन्वेस्टर हो कि ना नो हाँ. yes sir शेयर होल्डर ऑल्सो इन्वेस्टर a debtor is also investor who gives debt or some secure loan or whatever how a shareholder is a owner but also an investor otherwise the प्रथम हला the rights and privileges of shareholders এটা খালি particular to shareholders then investors problem and protection what are the things available in corporate governance system in government in India so that is how we will go through this module I have made around 50 slides so I will try to at least go through 25 slides so this is the second slide including this 50 let us see how far we can go agent is a person who acts on behalf of another person okay so one who manages business financial or contractual matter for an actor performer writer etc एगुड़ा भी agent आउ हमरो मैनेजर बोली कहती ना
बड़ बड़ प्लेयर मानकर बड़ बड़ एक्टर मानकर they are also agent. So आजिकली घर बिक्री घर भड़ा सबुरे एजेंट लोक आइले. So agents in corporate governance आम पढ़िया agent definition पर. So agents can be director, auditor and shareholder. एटा लागू जी ठीक ना भूल? Can you imagine director as an agent Yes, from sir. corporate governance point of view? Because director can ensure that things are followed in the right way. So he is an agent. Through him, the corporate governance mechanism can operate. Similarly, auditor also is an agent. Then shareholders. How shareholders are agents? काली आमे जेतले विभिन्न देशर yesterday when we were reading about various models, did you notice anything about shareholders' rights unique to America or unique to UK? We saw that they have the right to vote and decide. AGM, right? They can decide on dividend, they can decide on objective change, they can decide on AOA, MOA and other bigger contract which can affect the company as a whole. They can decide on appointment of directors, auditors, all that. So they are also agents. So director role है fiduciary role. Fiduciary role माने कौन? A role which is pertaining to financial matters. And here he acts as a trustee, means he is empowered or behaves like a owner in a way. Trustee is more than a owner. जेमती गार्डियन बोली आमे गोटे कहू पन्ना दाई गोटे थिला ना पन्ना स्टोरी गोटे अछि जे से राजकुमार को बचाया को निज छुआ को बलि दे दिला. So that type of role is a trustee's role. They can sacrifice anything for the betterment of the organization. So not necessarily some directors simply kariye, but directors have that type of role. And there are duties which are indicated by the law, Company Act and all. So that is common law duties. Specific duties, and there are also specific duties under Companies Act. Additional duties in case of a listed company and other statutory duties. So basically, एटा हला गोटे ओनरशिप जिंस बाकी गुडा हला एज पर लॉ एंड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम. Fiduciary duty कौन हला good faith and bona fide acts. Directors must act honestly without negligence and in good faith in the bona fide best interest of the company. Proper use of power. तांको power को से माने भूल बा निजर पर्सनल ग्रोथ पाई पर्सनल गेन पाई यूज करिवे नाही. Unfettered discretion. They cannot validly contract or act with one another or with third parties as to how they shall vote at board meetings or otherwise conduct themselves in the future. Means group of directors without bothering for having independent decision, if they form a cartel and decide on the future of the company, that is also not expected of them. Each of the directors should तार जति नॉलेज बा तार जहाँ बुद्धि अच्छी से अनुसार बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एंड नॉलेज ही शुड vote or decide on matters placed before him. So this also comes under that selfish interest को जो जिसे guide ना हो.
lack of conflicting interest. Yesterday we have read about that. Directors have to make continuous disclosure of their interest in various transactions of and with the company. Directors cannot use without the consent of the company's properties, opportunities, or information for their own profit. Directors have a duty not to compete with the company. Common law duty. Duty to exercise reasonable skill and care. या माने कौन? आपण माने कौन सी फॉर्म फिलअप कला बेलू तले गोटे अंडरटेकिंग दियंती कि all the above information furnished by me are true to the best of my belief and knowledge. Yes, sir. Disclaimer. तमानेटा कौन? तमानेटा कौन? ମାନେ ହେଲା ସାର୍ ସେଗୁଡାକ ରାଇଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ता माने हला जे आपण जानी सुनी कौन सी प्रकार भूल इन्फॉर्मेशन दो नांती अजाणतरे भूल हेतिला अलग कथा to the best of my ability and knowledge. Similar जिनस ये एक्सपेक्ट करा हुए डायरेक्टर पाखरु जैसे ऑब्जेक्टिवली काम करिवो विथ ड्यू केयर। ऑब्जेक्टिवली माने जोटा कंपनी रो ऑब्जेक्ट बा से जो डिसीजन जोथि पई उद्दिष्ट और डायरेक्टेड एट सेति पई जति की दरकार चिंता बा बुद्धि बा केयर लगेया को पड़िबो एंड दैट इज एक्सपेक्टेड बाय कॉमन लॉ। Next is subjective duty to exercise skill. So, तांकर जति knowledge on a particular thing, he should utilize that. He should not leave it to somebody else's judgment and decision. Knowledge. Duty to act within the powers of the company. Memorandum and articles. जहाज मान articles of association and memorandum of association ये दीटा अंडर से काम करिवे। जहाँ कंपनी रा परव्यू रे बा ऑब्जेक्टिव रे अछि सेटा को ही फर्दर करिवे। He will not bring in something new on his own. Duty to exercise independent judgment. Directors should not take decisions at the directions of others. ये जो आगरो हमें पढ़ले जे मिसी की डिसीजन लेवे नहीं सेटा। Duty of supervision. The director has a duty to exercise supervision over the officers of the company to whom they delegate powers. Duty of confidentiality. The directors have a duty of confidentiality towards the company and should not disclose or make use of confidential information relating to the company for any purpose other than for the benefit of the company. Directors manka pakhre they are privy to many important information which can lead to even stock market manipulation. So they should not use those information for any other for someone else's benefit also. That is, all these are expected by common law. So you will be liable to be punished if you are found guilty of doing this. Specific duties prescribed under Companies Act 2013 and its amendment. Administration and compliance. Filing return with registrar of companies. Directors must file a return of allotment of shares within 30 days with the registrar. Convening shareholders meeting, it will director of the duty. Yeah, माने no, the director एटा सब करिवे. Company secretary will do what they have to sign. Directors have to sign and approve. A statutory meeting should be convened after 1 month but within 6 months from the date of which a public company is entitled to commence its business. The first meeting back. The first AGM should be convened within 18 months from the date of incorporation. AGM generally वर्ष को थरे हुए. Generally for the financial result declare कला को हुए. तो सेट लगी जेहेतु प्रथम मीटिंग टा 6 मास भितर बोली दिया आइती तो सेटू आउ 12 मास ऐड करके 18 मंथ्स लिखा आइती.
An extraordinary general meeting must be convened by the directors on a requisition of members holding at least 10% of the paid up capital of the company. Paid up capital माने कौन? ସେମାନଙ୍କର 10% ସେୟାର ଥିବ କମ୍ପାନୀରେ। नहीं 10% paid up capital थिबो सेटा କିନ୍ତୁ paid up capital माने कौन? Total share capital of the company. ଗୋଟେ कंपनी ଯେତେବେଳେ register ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ROC ର ଗୋଟେ fee ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କେତେ capital declare करिए ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମ कंपनी ର equity 10 କୋଟି ଟଙ୍କା କରି so you have to pay a particular fee 50 ଲକ୍ଷ କରିବେ you have to pay a particular fee Raj, security deposit. ନା ନା ସେଟା ହଉଛି normal fee ମାନେ that is how government earns from companies तो ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟରେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଇକ୍ୱିଟି ଲଗେଇବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଉଟର ଲିମିଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ସୋ ସପୋଜ ୟୁ ହାଭ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର 50 lakhs ଆପଣଙ୍କର शेयर capital that is authorized but you may not invest 50 lakhs ମାନେ immediately or you have to approval ନେଲା ପରେ authorized capital କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର 35 lakhs କରାଯାଇଛି ସୋ 35 lakhs ଆପଣ ମୋବିଲାଇଜ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଣିବେ ଇକ୍ୱିଟି ହିସାବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି ପେଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ कंपनी ऑथराइज कैपिटल जदि कोटी टंका अछि किंतु पेड अप कैपिटल अछि 50 लाख तो 50 लाख रो 10% नॉट दैट कि ऑथराइज कैपिटल जदि कोटी टंका अछि तार 10% दरकार एटा गोटे टेक्निकल टर्म एंड ऑथराइज कैपिटल रो माने हला ता बियॉन्ड यू कैन नॉट मोबिलाइज इक्विटी सर ताले 10% 1 crore ରୁ 10%। 10% of the paid up capital से समय रे जेतिकी कैपिटल इक्विटी इन्वेस्ट हेची कंपनी रे मोबिलाइज हेची तार 10% पर्यंत माने जने लोक जदि 10% रखिची से नोटिस देई परिबो गुटे ईजीएम करियाकू पांचटा लोक मिसिकी 10% जदि अचीव करचंती ताले से माने देई परिबे 100टा लोक मिसिकी कले भी सेही 10% पेड अप कैपिटल रो 10% पर्यंत इक्विटी होल्डर माने मिसिकी गुटे नोटिस देले डायरेक्टर बाध्य गुटे ईजीएम डाकियो बुझी गेला ना नहीं यस सर। approval of company's document director must approve the balance sheet and profit and loss account audit requirement in case of winding up or liquidation the director must ensure that the books of account of the company are completed and audited up to the date of winding up order issued by the company code. Whether winding up ho by liquidation ho or even if you want to close a company. Winding up can be a voluntary action, can be because of some legal issue also. सही केस रे भी डायरेक्टर रोल हला the books of account complete हबो और audited हबो in spite of all this ता परे भी जतले ROC agree करिवो कंपनी को क्लोज करिवो at that point of time ROC will take an undertaking from all the directors that in case any liability is found even after closure of the company then the directors will be personally responsible for making all those liability good and they have to pay that amount from their own account. So directors liability for that is unlimited. You have to give if it is proven that there is a liability. Additional duties in case of a listed company. Declaration of pecuniary relationship. Company sangre kaun relationship and transaction of the non-executive directors vis-a-vis the company shall be disclosed in the annual report. Independent director man karo non-executives are independent director. Tankara
कंपनी सारे कौन फाइनेंशियल रिलेशन अच्छी सेटा लिखिया को पड़ियो declaration of material contracts in the prospectus for public offer the details of remuneration of a director within or more than 2 years before the date of prospectus should be declared. The company also needs to disclose the details of every material contract not being in the ordinary course of business entered into more than 2 years before the date of prospectus. इटा मानने कौन किसी बुझी होची every material contract माने कौन किसी बुझी होगी गोटे डायरेक्टर अछंती एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंपनी को गोटे असाइनमेंट मिला ऑफ सम कंसल्टेंसी लेट अस से और फॉर सम सप्लाई समथिंग लाइक दैट सर्विस सेक्टर भी ही पारे सही जगह रे द डायरेक्टर हैज अ स्किल व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर delivering that service or that contract. So say that the director can also be given some compensation. So there is a material contract, means so there is some transaction. So all these, the जो दिन prospectus file होती है IPO पाई, तार 2 वर्ष पूर्व पर्यंत all these contracts are to be made public. माने director माने कितने involved or how much they're getting from the company or how the company through data जिनसे जना पड़े एक तो whether the directors are really taking money or the company is finding out ways to pay them money अब से तरह professionalism रवि lack of professionalism और professionalism दीटा को देखा जाए करियो so यही सब disclosure है ले the investor will be free to money decide so माने डायरेक्टर मानकर any contract with the company material contract माने हला which is a contract of transaction type of thing so whether it is खाली पैसा न देले भी if suppose some facilities are being taken ताहले भी सेटा material contract हबो तो सेटा को you have to the company has to declare बुझिएला ना नहीं यस सर ये सुन तो थी ना नहीं कौन सर सुन ना मो कथा सुना जाऊ ନା ସାର୍ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ହଉଛି ତ डिफिकल्ट है जाऊ Yes, ନାଇଁ sir. ନାଇଁ ए विषय रे केबे किछि आगरो भाबी नांती ମାନେ କିଛି ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ ସାର୍ ନ୍ୟୁ ରିଜର୍ଭ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଆସୁଛି ତ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଉ ତାପରେ not being in the ordinary course of business ର ମାନେ ହେଲା कंपनी रो जनरल माने नॉर्मल बिजनेस रो पार्ट न होई जदी नाही ताले आउरी दरकार जे ता विषय रे ए जो कॉन्ट्रैक्ट गुडा डायरेक्टर मान संगे कोन हेची सेटा जानवा दरकार मने करंतु you are a company is into manufacturing of certain product सेटा हला तार कोर बिजनेस किंतु साइड बाय साइड से कंसल्टेंसी भी दोची फॉर सेटिंग अप सच बिजनेस the director possesses that expertise to give that consultancy so ei jagah jodi dekhibe there is a risk you are giving rise to competitors by giving a consultancy the director so your business company's business may also get affected kintu gudai jagah re thibo if the technology is so specific that tamo chada how kei seta ko use kari paribe nahi you can enter mane kei dei paribe nahi properly so you can enter into a contract protective contract and the company can benefit in that sense also am orissa sponge boli na sunchandi
sir. ओडिशा स्पंज बोली गोटे कंपनी थिला अछि भी बोली बर्तमान तो केउंझर नहीं केउंझर थिला कि sir? फेर गोटे पटनायक ना महांती फैमिली रो थिला पटनायक ये मेन लोक थिले से डॉक्टर महांती ना कौन ना भूली गई he was the owner of the patent for making that process is sponge iron making process रो से ताको नारे से पेटेंट थिला हला तो तांकर से कंपनी दी प्रकार काम करथला निजे स्पंज आयरन बनेला आयरन और माइंस गोटे नेइतला वन ऑफ द बेस्ट माइंस आउ उषा मार्टिन ना कहा थ्रू रे से छोट छोट सप्लायर वन को भी से स्पंज आयरन बनेवार टेक्नोलॉजी देउतले एंड सेटा भी गोटे प्रोजेक्ट टाइप रो करिकी ही वाज अर्निंग सब्सटेंशियल मनी मिसमैनेजमेंट पई कंपनी टी बंद हो गला बट he and his family has made lot of money and they shifted to Kolkata एटी भुवनेश्वर भी किछि जगह फागा थिला तांको पुओ ताको बिकी कोन करथला सना फाइनली दैट बिजनेस फिजल ताको भूषणपुर रे नेला ए जा पियला but ei jaga re if you are a listed company and you are doing such businesses which are not in the normal course of the company then as a director that declaration has to be given like na there is a possibility that the company will do badly how general public ro paisa फसी जीव ओडिशा स्पंज रे कोन हला पब्लिक रो पैसा विशेष नथला से तांकरी पैसा थिला से तार नेकिर बाहरी गेले कंपनीटा बुडी गेला एम्प्लॉय माने फसले जा हला किंतु आपण तार केउझर विराट बड़ गोटे कैंपस थिला स्कूल टा पर चलै थिले विसने so there will be many issues duties are then other statutory duties foreign exchange management act this is one of the very strict and stringent act এই act रे जदि कोनोसी भी डायरेक्टर ये से किछि साधारण मात्रा रे भी जदि डेविएशन देखा गला the director can be jailed and India रे foreign exchange is a big issue government has it is very difficult or government really it is very difficult to earn foreign exchange because we need foreign exchange to import our essential goods so any mismanagement of foreign exchange can lead to very criminal offenses and you can be punished so that duty director has to properly do अपन माने डॉक्टर एसके तमोतिया का नाम कहीं सुन जान he was once upon a time acting CMD of Nalco he was director of project and acting CMD he is a very famous man and a very good man but he was in visa still and for some reason or other under this act because his signature was there he didn't do anything but somebody under him did and he had to spend one night in the jail. He's such a big personality. It was a very bad thing for him. Duties under the, but finally nothing happened because he didn't do anything wrong. It was the juniors who were manipulated, but because he was the director, so he was punished. But when the group went on, the culprits were found and he was exonerated. Duties under Negotiable Instrument Act. Negotiable Instrument Act कौन जानते? Can you give an example of a negotiable instrument? We use it. Check, sir, check. कौन पे तक negotiable को आवे? बार्गेनिंग करे सेटलमेंट करा जाय सेत में किसी पार्टी अछंती पार्टी किसी था तो सर नेगोशिएशन 2 or 3 पार्टी था एटा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रे करा जाय सर सेत पे नेगोशिएशन गोटे चेक रो वैल्यू टा कोन
Monetary value. ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ତା ମାନେ ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ଇଜ valued at 10 lakh rupees ଯଦି ସେ legally ବା properly ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଚେକ୍ ର ବି ଥାଏ ରେଞ୍ଜ ସବୁ ଚେକ୍ ରେ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖିଲେ ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଅନର କରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ରଡ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଓଟିପି ଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଦେଇନି କିମ୍ବା ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଜଣେ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ସାଇନ୍ କରିକି ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଇଜ ଫାଉଣ୍ଡ ଫର୍ଜରୀ ନୁହଁ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେ ସେ ପଇସା ଦବ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରେ ତାପରେ ଆପଣ ଅଟକେଇଲେ ଯାଇକି ସେଟା ଅଟକିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ଆଡୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରୁଛି ଫ୍ରଡ କୁ ଫର୍ଜରୀ କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ହାଇ ଭ୍ୟାଲୁର ଗୋଟେ ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେବେ ଆଗକୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଚେକ୍ ଅମୁକ ଲୋକକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡାଏ କେସ୍ ବି ହେଲା ଯଦି ଏମିତି ସିଗ୍ନେଚରରେ ପଳେଇଲା ଲୋକ ପଇସା ଲୁଜ କଲେ ତ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ବି ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଆରବିଆଇ ଲାଗୁ କଲା କି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଅଥରାଇଜେସନ ହାଇ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ବି କେତେବେଳେ କଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ କଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ ଟା ଦେଇଥିବେ ଗୋଟେ ଇମେଲ ଟେ ବି ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଅମୁକ ଅମୁକ ପାଇଁ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆସିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯଦିଓ ସେ କାଗଜରେ ବି ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ କାଗଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଜ ଭେରି ଟୁ ମଚ୍ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ତାପରେ ନେଗୋସିଏବୁଲ ମାନେ ଏଟା ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ 9,50,000 ଦବ ସେଟା ନେଗୋସିଏବୁଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି payable at par Bhubaneswar check and if it is payable at par in all branches of State Bank of India you can go to any branch and get that money so or any branch can pay that money that instrument is so powerful so negotiable instrument ର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ example ହେଲା ଏଇଟା even some bank guarantee and all small things can also be negotiable instrument act under ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଥିରୁ ବଡ କମନ ୟୁଜ ହୁଏ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ଛୁଟି ଗୁଡା ଯୋଉଟା ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି ତାକୁ ବି ନେଗୋସିଏବଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଛୁଟି ଗୁଡା ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି ତ ଆମର ନେଗୋସିଏବଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ which is very particular for business ସେଟା ଅଛି ସେଥିରେ ବାଉନ୍ସ ହେଲେ ଯୋଉ ଜେଲ ହବ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହବ ସେଇଟା ସେ ନେଗୋସିଏବଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଛି ଯଦି ଚେକ୍ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ବାଉନ୍ସ ହେଲା ଯିଏ ଚେକ୍ ସାଇନ୍ କରିଛି ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହବ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ଟରର ବି ସେଇଟା ରୋଲ ଅଛି ଏଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡିସଅନର ହେଲା every person who at the time of such dishonor was in charge of overall control of the day-to-day business of the company both under law and a matter of fact shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against so ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯଦିଓ ସେ ଚେକ୍ ସାଇନ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ କରୁନାହିଁ ଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ସାଇନ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସୁଛି as a matter of fact or deemed to be involved the director also can be responsible along with the manager ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ statutory responsibility duties under competition act ଟା କଣ या नाटा ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଗରୁ ୟା ନାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା 2002 ରେ ଏଟା କମ୍ପିଟିସନ ଆକ୍ଟ ହେଲା ତା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଥିଲା କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି No, sir. MRTPC ବୋଲି ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି Monopolies and Restrictive Trade Practices Act ସେ ନାଟା ପଢିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି Monopolies and Restrictive Trade Practices ମାନେ ଯେମିତି ଆମର monopolization ବା ଆଳୁ ମମତା ଦିଦି ଆଗରୁ କେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଳୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଥିଲେ ଓଡିଶାକୁ ଦେବେନି ବୋଲି
तो बा आम देश रे जेतेबेले कोनोसी गुटे जिंस बा स्टेट रे बा शहर रे किछि लोक मिसिकरी गोटे कार्टेल टाइप रो करिकरी जदि मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट करिवे टू टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट डिमांड तो से जगह रे एमआरटीपीसी एक्ट अंडर रे तांको पनिशमेंट दिया जाई पारिबो से एमआरटीपीसी हैज बिकम a competition act basically everywhere competition should be encouraged to get the best value for that work or for that service and so on. Tendering is part of that. Similarly, जेतेबेले कोनोसी मर्जर एंड एक्विजिशन हुए जेतेबेले कंपटीशन कमिशन बोली इंडिया रे गुटे अछि ता पाखरु अप्रूवल नवाको पड़िबो टू सी दैट the resulting company after merger or acquisition does not become a monopolistic structure. Monopolistic माने से आसु से so competition act रो जो तार भी डायरेक्टर रो रेस्पोंसिबिलिटी अछि ड्यूटी टू फाइल रिपोर्ट विथ कमिशन ए कंपटीशन कमिशन पाखरे भी जो रिपोर्ट फाइल हो तार भी साइनिंग अथॉरिटी हेले डायरेक्टर और ताकर रेस्पोंसिबिलिटी हला जे दे आर रेस्पोंसिबल फॉर डूइंग दैट ड्यूटीज अंडर लेबर लॉ So in legislation such as employees provident fund is a big thing. You cannot just stop somebody's provident fund. You cannot just stop somebody's gratuity. You cannot just stop somebody's pension unless there is some criminal negligence and all. You cannot, you can stop. Otherwise, no. जदि कहार पेंशन बा प्रोविडेंट फंड बा ग्रेच्युटी रो जदि किछि भी आपण माने करले द डायरेक्टर विल बी डायरेक्टली रिस्पांसिबल देन नेक्स्ट इज हमें पढिले गोटे एजेंट हेले डायरेक्टर सेकंड एजेंट हेले ऑडिटर सो एज पर सेक्शन 139 in a company act every company shall at the first AGM appoint an auditor an individual or a firm appointment includes reappointment so first हला जो first AGM हला सेकंड को हबो 18 मास भितरे तापर प्रति डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स केते टर्म पाई हेबे प्रति वर्ष सेटा तांकरा गुटे अपॉइंटमेंट ता हबो an auditor is an independent professional person qualified to perform an audit in accounting and auditor is sometimes who is responsible for evaluating the validity and reliability of financial statement of an organization. Tenure. Company cannot appoint an individual as an auditor for more than one term of 5 consecutive years and an audit firm as an auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years. The company cannot appoint an individual as an auditor for more than one term of 5 consecutive years. माने कौन प्रति वर्ष अपॉइंट हला 5 वर्ष पई हेई परियो बा थरटे भी हमें 5 वर्ष रो गोटे टर्म हमें देई परिबा लगातार 5 वर्ष पई
किंतु 5 वर्ष पर जदि से सिंगल इंडिविजुअल हमर ऑडिटर ताको हमको बदलाया को हबो this is to ensure that the owners and the auditor do not form a team and manipulate. Then if there is a auditor firm, it's not an individual, it's a group of auditors, chartered accountant. Say case re 2 terms of 5 consecutive years 10 वर्ष पई समान रही परिबे एइथरे करा हिजी एइथ पई जे सिंगल लोक मैनिपुलेट हवा सहज किंतु गोटे टीम जदि अछि ताले there is possibility that more people will not allow wrong practices to be followed in a company. So sit पई 10 वर्ष टाइम दिया है. An auditor will not be eligible for reappointment of 5 years from the completion of his terms after completing a 5-year term. माने इंडिविजुअल लोक हेले 5 वर्ष रहिला लगातार तापर 5 वर्ष छुट्टी 10 वर्ष पर पुणी ताको अपॉइंट करी हो आ फार्म हेले 10 वर्ष समान रहिले तापर 5 वर्ष छुट्टी तापर पुणी अपॉइंट करी हो. If a partner who is in charge of an audit firm and also certifies the financial statement of the company retires from the said firm and joins another firm, such other firm shall also be ineligible to be appointed for a period of 5 years. बुझियोछि X थिला गोटे ऑडिटर जे कि सपोज पार्थ मिश्र एंड एसोसिएट्स बोली गोटे कंपनी हमर चार्टर्ड फर्म अछि से माने मोर गोटे कंपनी अछि तार भी ऑडिटिंग करंती बट सेमती बहुत गुड़ा अछंती तो सेही केस रे जदि जणे से छाड़ी की पळेला ताका पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट Partha Mishra has completed 5 years of auditing in a company. So, सही माने से Partha Mishra जे पार्टनर छाड़ी की पड़ेला जे साइन करथिले तो सही केस रे से जो नया पार्टनर कंपनी जॉइन करिवो सेही कंपनी भी डिबार हे जिवो फ्रॉम माने 5 वर्षिया टर्म जदि सरीची तापरे आ उसमें सेही कंपनी माने कॉर्पोरेशन पई ऑडिट फर्म हे परिबे नाही. So this is a very strict rule and this is to ensure that the owner and the auditor do not form a team to manipulate financial statements. Government company auditor kiye ho. Our CAG, Controller and Auditor General, is the auditor for government companies. And finally, Auditor General CAG would report diyanti to Government of India. Eligibility, qualification and disqualifications of auditor. India re and chartered accountant can only be an auditor. A good the firm achi and it has to have at least one chartered accountant and the chartered accountant is only authorized to sign on behalf of the firm. अन्य माने साइन करि परिबे नाही. सर सर गोटे पदवी विषय जे हम जो डिपार्टमेंटल ऑडिटर अछंती सेमन कोन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट समान ए जो आसी कोन डिपार्टमेंटल ऑडिटर आसंती हम डिपार्टमेंट सब लोग ये ऑडिट करिया पे सेमाने परा आपनकर जो सीएजी अंडर रे अकाउंट माने एजी ऑफिस अंडर रे जो माने सेमाने डिपार्टमेंटल ऑडिटर सर आउट सर लोकल फंड they need not be लोकल फंड ऑडिटर गोटे कहउछन बुझियल लोकल फंड ऑडिटर आमे थी जो कंपनी रो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माने अकाउंट्स रो कथा जो एनुअल स्टेटमेंट अकाउंट माने एनुअल अकाउंट्स रो कथा आमे होउची सेही थरे ऑडिटर रो सिग्नेचर कथा पड़ी गवर्नमेंट कंपनी पई एजी ऑफिस रो लोक माने सीएजी अंडर रे एजी आसे ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हम ताका अंडर रे एजी ऑफिस स्टेट एजी गुडा आसे तो से माने ऑथराइज दे आर नॉट नेसेसरी टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट किंतु पब्लिक सेक्टर कंपनीज मानकर भी ऑडिटर माने प्राइवेट फर्म माने ऑडिटर थांती सेरा रखी हबनी बोली नाही किंतु ताकर सेही जो ऑडिट रिपोर्ट दैट गोस टू सीएजी रो फाइनल अप्रूवल पर जाय कि सेटा एक्सेप्टेड बा अनएक्सेप्टेड हुए बुझियला जोठी प्राइवेट एजेंसी को आपण लगेबे ऑडिट पई सेही जगह रे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू बी द साइनिंग अथॉरिटी
इवन गवर्नमेंट कंपनी रे जो माने ऑडिटर फर्म थांती सेथरे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही साइन करि परिबो किंतु ऑडिट माने सीएजी ऑफिस रे जो माने काम करचंती से माने गोटे आम भुवनेश्वर रे ओडिसा रे जो एजी अंडर रे अछंती ऑडिटर माने से माने गोटे परीक्षा दियंती स्पेसिफिकली जेमति ओएस ओएफएस ओजेएस अछि सी टाइप रो गोटे परीक्षा दियंती सेथरु पास कला पर से माने ऑडिटर हेकी पोस्टिंग होती क्लियर हला सर ସେମାନେ ବି ଇଏ କରନ୍ତି ଗୋଟେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ରେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଥିବ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବି କହନ୍ତି କହିବେ ନା ऑडिट अनुसार भूल थिले कहबे बा ता जदी गोटे जिंस आपण लेखिचंती तार जस्टिफिकेशन देई न पाले ताले सेटा जदी खर्च हेई जाईची ताले पनिशमेंट होबो बा तार जहा उचित पदक्षेप नेवा पई सेने मैनेजमेंट को कहबे ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବି ସେମାନେ फिक्स fix हबो କରନ୍ତି। सब फिक्स हबो मन करंतु टेंडरिंग हवा कथा टेंडरिंग टाकू आपण जेमति मन करंतु गोटे केस रे लेखा आइची स्टैट्यूट रे लेखा आइची जे बा आपण माने गवर्नमेंट रो स्टैट्यूट रे बा जोठी भी लेखा आइची जे एतिकी पैसा रो ऊपर को हेले माने ओपन टेंडर हवा कथा आपण ताको लिमिटेड टेंडर कर देले विदाउट प्रोसीजर फॉलोइंग द प्रोसीजर ताले यू विल बी लायबल फॉर एक्शन ऑडिट पारा रे भी आसीबो ए सब अछि ना सर ऑडिट ऑडिट पारा ऑब्जेक्शन जो ऑब्जर्वेशन सब आसी तो कंप्लेंट न ना करले सेने रिपोर्ट देबे ना सेइथरे से ऑडिट पारा को जिन तांको रिपोर्ट रे सेने लिखिबे ताकू आपन को पुनी रिप्लाई दाउ पड़ियो सीएजी रो भी सेमति रिपोर्ट आसे ताकू आपन रिप्लाई करिवे से रिप्लाई पुनी कंपाइल हेकी माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो कंट्रोलर ऑडिटर पाकू जाए से माने चेक करिवे से माने यदि एक्सेप्ट करले आपनकर एक्सप्लेनेशन ताले आपन माने पार पाइले यदि न पाइले ताले आपन मान माने से पब्लिक सेक्टर डायरेक्टर मान को ऊपर भी एक्शन नहीं परिबो ये सर बहुत मुश्किल हुए आ सेमान को कन्विंस करे आते सहज न किंतु ए प्रेजेंट गवर्नमेंट रे हमर सीएजी हैज बिकम वेरी माइल्ड सीएजी रो आउ विशेष प्रॉब्लम नाही मु विनोद राय कथा कहउती से दिन जो मने पड़ नथला हमर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया विनोद राय थिले हु बिकम बीसीसीआई प्रेसिडेंट से यूपीए गवर्नमेंट रो डाउनफॉल पई से राजी थिले किंतु से जहां भी रिपोर्ट देइथिले nothing was proven later on and nobody bothered to even see that सेटा ठीक की भूल बोली 2G स्पेक्ट्रम स्कैम रे केते लक्ष हजार कोटी टंका लिखले कोल स्कैम रे केते लक्ष हजार कोटी टंका लिखले किंतु किछि हला नहीं एक्सेप्ट दैट स्पेक्ट्रम गुडा सुप्रीम कोर्ट सब स्पेक्ट्रम अवार्ड टाकू जीरो कर देला माने काट देला से आउ थरे ये हला किंतु जो माने दाई बोली लिखा आइले तांकर किछि हला नहीं सेमति कोल रे लीज गुडा कैंसिल हे गेला किंतु जो एते कथा हेतला जे पैसा खाई गेले बोली किछि रिकवरी हलानी किछि हलानी so ultimately you don't know what has happened at that point of time similarly किंतु ता परे ए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रे सीएजी रो किछि रिपोर्ट आपण कोठी पाइबेनी एक्सेप्ट एज आई सेड खाली नितिन गडकरी विषय रे गुटे रिपोर्ट आस्तिला दीटा से जो पालम एयरपोर्ट पाखरे बाय एक्सप्रेसवे पई which was again किछि दिन पेपर रे बाहरला न्यूज रे रहला तापर खत्म हे गेला तापर जो दी जण ऑडिटर्स माने देइथिले जण को सेटू राजभाषा अधिकारी को करके पठे देले आ उटे काउ कोन करके पठे देले एंड इट वाज फिनिश्ड So that means audit value has no auditor report has no value. बुझेलानी Audit report has no value. कहीं गोटे जाय रे सरकार पळेला गोटे जाय रे सरकार ताको मैनिपुलेट करि परछि तो वैल्यू अछि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दी थिंग्स आर हैंडल सब जिंसर वैल्यू अछि ताको यूज करिया ऊपर निर्भर करछि चीनी जदी बेसी खाइबे डायबिटीज हवार चांस अछि किंतु चीनी बिना चीनी रे खाइले भी से खाइबार मजा कम पाइबे तो देयर आर ऑल माने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हैज टू बी सीन बट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिटर्स रोल इज मैंडेटरी बिना ऑडिटर रे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल हवार 99% चांस अछि किंतु यदि मिसयूज हला समानकर रोल गुडा देन इट बिकम्स डिफिकल्ट बुझी होची सर
So a person can disqualify have an auditor by an officer or an employee of the company. He cannot be an auditor. A person whose relative is a director or is in the employment of a company, a director or key managerial position. Company with a director or key managerial position is relative be auditor nahi. A person who has been convicted by a court of an offense involving fraud. Fraud means relating to money. And a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. से जाय रे एमती नाही जे से कन्विक्शन माने जेल माने फाइन भी हेई पारे किंतु जदी कन्विक्शन हेई छि कोर्ट रे 10 वर्ष नगला पर्यंत से ऑडिटर हेई परिबो नाही फाइनेंशियल मैटर ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर make report. The auditor shall examine every financial statement and give a report to the members of the company. The auditor's report will include whether he has sought to obtain all necessary information and explanation, whether proper books of account have been kept, whether company's balance sheet and profit and loss account are in agreement with books of accounts of the returns and returns. Mane kona e last sheet balance sheet and profit and loss account are in agreement with the books of accounts and returns. Books of accounts mane kona? Cash book and passbook. That is part of it. So the daily expenditure jaha noting thae. Sei through balance sheet of profit and loss hava katha. So auditor ro gote certification kana balance sheet and profit and loss are very high level report. So higher level report ta तळू compile हेई जे नाही सेटा देखिया को पड़िबो. Audit report of government company. The auditor must submit a report to CAG which should include the action taken by him and impact on accounts and financial statement of the company. The CAG of India is जो auditor मु कहली auditor firm जोटा appoint होंती PSU रे भी से माने CAG को गोटे report देबे. CAG of India shall within 60 days of receipt of the report have to write गोटे supplementary audit जो दरकार करिवे comment upon a supplement such audit report. जदि किछि audit report ऊपर ताकर comment थो 60 दिन भितरे देबे. जदि न देले माने सेटा accepted हला. CAG may cause test audit to be conducted of the accounts of such company. सेटा भी ସେମାନେ चाहिले करि परिबे. हमर एठी कोन हबो ऑडिटर जेतले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट दबो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिपोर्ट ऊपर जहा व्यू दबो ऑडिटर हैज टू कंप्लाई प्राइवेट कंपनी रे बा लिस्टेड कंपनी बा शेयर होल्डर एजीएम मीटिंग रे जदि शेयर होल्डर मानकर किछि ओपिनियन थिवो बा कमेंट्स थिवो ताकू भी ऑडिटर रिप्लाई करिया को पड़िबो. रिप्लाई ऑडिटर प्रेजेंस इन ऑल एजीएम्स इज मैंडेटरी. Liable to pay damages as per section 245 of Companies Act. The depository and members of the company also have right to claim damages or compensation from the auditor, including audit firm of the company, for any improper or misleading statement of particulars made in his audit report or for any fraudulent, unlawful or wrongful act or conduct. Depository and members. Depository माने जो माने मन करंतु लोन फोन देइचंती आ members माने shareholders and all. Samaste are they can sue the auditor including audit firm if something is found wrong. So it will law re provision achi. Tapre next is branch audit. Where a company has a branch office, the accounts of that office shall be audited either by the auditor appointed for the company or by any other person qualified for appointment as an auditor of the company. The branch auditor shall prepare a report on the accounts of branch examined by him and send it to the auditor of the company, who shall deal with it in his report in such a manner as he considers necessary. ये जो branch auditor भी provision अच्छी है, branch auditor the main auditor करी पारे बा out auditor who is qualified to be an auditor appoint ही पारे और से report टा किंतु whether it will come into the केमती address अब in the manual report
সেটা মেইন অডিটরের রোল, নট অফ দি ব্রাঞ্চ অডিটর। কিন্তু ব্রাঞ্চ অডিটর উইল অডিট as if the branch is a full fledged company, সেই টাইপর সে অডিট করিব, যাহা যাহা করিয়া কথা মেইন অডিটর মেইন কোম্পানি ପାଇଁ করিব, সে ব্রাঞ্চ ପାଇଁ ବି এই অডিটর সেই কাম করিব। And he will have similar responsibility and responsibilities. অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড আমি কথা হইছিলে, এটা কিয়ে ফিক্স করে অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড? অ্যাকাউন্টিং এন্ড অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডিয়ারে কিয়ে ফিক্স করে? CAG CAG और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CAG sir। नहीं, auditing standard is decided by Institute of Chartered Accountants of India, because they are also an institution who is responsible for corporate governance, and they are the knowledgeable people. So they are the main person who will decide. CAG and others will give some opinion. The general standards of auditing are fixed by the Indian Chartered Accountant Association, ICAI na kaun juda, Institute of Chartered Accountants of India. Then fraud reporting. If an auditor of a company finds that an offense involving fraud is being or has been committed against the company by officers or employees of the company, he shall immediately report the matter to the central government. Eta private ପାଇଁ ବି applicable, government ପାଇଁ ବି ମାନେ ସେ board କୁ କହିବ, ଯଦି board ବାଲା ନ ଶୁଣିଲେ ଲାଗିଲା ତାକୁ, so he is also he is free to report to MCA. ତାପରେ winding up ଯଦି company ରହୁଛି, at the time of voluntary winding up of a company, it is mandatory requirement that the auditor should attach a copy of the audits of the company prepared by him. କାରଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲାଇବିଲିଟି ଯାହା ଯାହା ବାକି ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେଟା କ୍ଲିୟରଲି ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ଲାଇବିଲିଟି ଥିଲେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। सर कंपनी बंद होले आउट लॉस सब। कंपनी बंद हेले कंपनी बंद न कले आउरी बेसी लॉस हबो। हाँ नहीं शुणु, एनपीए ହେଇଗଲା ତ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଜଣେ ବନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ ବିଜନେସ ଆଉ ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ସେଇ କେସରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଡିଟିଂ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେବା ଦରକାର। So ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ what is examined by auditor ଆମେ କରିକି will try to finish. So tomorrow 7 to 8 ଅଛି ବୋଧେ ନାଇଁ ସକାଳେ? सर अच्छी गल सर। Yes, sir. फर्स्ट क्लास टा अछि। ହଁ ଆଉ କଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି I don't know how सर ମାନେ ଆପଣ ମଡେଲ 1 ମଡେଲ 2 ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଆଜି ପଠେଇ ଦେଇଛି ମୋ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ, ସେ ସାର୍କୁଲେଟ କରିବେ ବୋଧେ କି କରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଏଥିରେ କାହାରି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେଭେଲ ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଟପ୍ ଲେଭେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ କର୍ପୋରେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ ଅଡିଟର ବା ଡାଇରେକ୍ଟର ରୋଲ, କିନ୍ତୁ କର୍ପୋରେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ affects all of you to a large extent। ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ you cannot be just because if a company cannot operate properly, corporate governance properly govern nohala, then it will make loss, the employees will suffer, everyone will suffer. So governance is a must, সেটা তো নিশ্চিত কথা, কিন্তু এই যে মেকানিজম বা এই যে রোল কথা আমি পড়ুছে এগুলা সাধারণত টিকে বড় কোম্পানিরে দেখায়, ছোট ছোট কোম্পানির কিছু রুল রেগুলেশন এতে নথায়। কিন্তু যদি on your personal level when you talk of any মানে গোটে প্রমোশন রে কিছু গড়বড় হেলা, ইনক্রিমেন্ট রে কিছু গড়বড় হেলা, if you find that some injustice is being done towards you or to some of your colleague, ସେଇଟା ମାନେ ହେଲା ଯେ there is not, ମାନେ I am not saying କି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ, କଣ ହେଲା, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମିଳିଲା ଯିଏ ଡିଜର୍ଭିଂ ନୁହଁ, ଯିଏ ଯାହା ଡିଜର୍ଭିଂ ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଟାଇପର କେସ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, বা ତାର ଯୋଉ
redressal भी properly हो नहीं, openly हो नहीं, then you will know that governance, corporate governance is not active. हम इंडिया रे भी जंदे बहुत केस रे we are at loss as a citizen of India. We do not know how to get redressal of a particular situation. ଯେମିତି ଇନ୍ଦୋରରେ ପାଣି ମିଶିଗଲା, ସେମିତି ସିମିଲାରଲି ମୁଁ ସଳେଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ରହେ, ଆମର ଏଠି ସପ୍ଲାଏ ପାଣିରେ କୋଉଠୁ ସ୍ୱେରେଜ ମିଶିଲା, ପାଣି ବାଲାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି there is no ଫରକ କଲେ. I'm not saying that, but if you find that they are very lukewarm in their response, you really do not feel that they are professionally addressing things. ଆଉ ଇନ୍ଦୋରରେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଗଲେ. So we know that there was no governance at all. Okay, thank Sir, you. so ହଁ, କୁହନ୍ତୁ. sir, foreign exchange management actually ଗୋଟେ director ର କଣ duty exactly ରୁହେ actually? ଆମର ଫେମା ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଗୁଲେସନ ଇଏ ଅଛି. ସେ ଫେମା ଆକ୍ଟରେ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହବ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ 10 ଟନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲା, ହେଲା, ସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲା ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା, କାହିଁକିନା ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ ଜେନେରାଲି ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ହୁଏ, ତାପରେ ଜିନିଷଟା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 9.5 ଟନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ତ କିଛି କରିବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ତ 10 ଟନ୍ ପଠେଇଛି, ଆପଣ ଗଲେ ଲସ୍ ଦେଖେଇଦେଲେ, ତ ଏମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରଲି ହେଲା and you don't take any corrective action. ତ ଏଇ ଜାଗାରେ there can be a case of FEMA violation କେମିତି, ତା ମାନେ ହେଲା there is a possibility ଯେଟା ଆପଣ 9.5 ଟନ୍ ମଗେଇକି 10 ଟନ୍ ର ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପଇସା somehow ଆପଣ ସେଥିରୁ କିଛି ବେନିଫିଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଜ୍ୟୁମ କରାଯାଇପାରେ. ସିମିଲାରଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲେ ବାହାରୁ, ଆପଣମାନେ ବିକି ନ ପାରିଲେ, ଯାହା ବି କଲେ, ଆପଣ ଯଦି ସେ ପଇସାଟା ରିଟର୍ନ ନ କଲେ ଠିକ ଟାଇମରେ, there are mechanism to establish that ସେଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଇ କେସରେ ବି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର, unless there are business loss case ଅଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ ସେଗୁଡାରେ ଅଛି. ମାନେ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇଜ ଭେରି ପ୍ରିସିୟସ୍, ତେଣୁ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଥ୍ରୁରେ ହାୱାଲା ବୋଲି ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? Yes, sir. ତ ହାୱାଲା କେସ୍ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ବି ସେମିତି ହୁଏ, ମାନେ ଆମେ ଡଲରରେ କିଛି ମଗେଇବେ, ଇଆଡେ ରୁପିରେ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଇଆଡେ ବିଜନେସରେ ଲସ୍ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ହୁଏ. So foreign exchange is very precious for India because we have deficit, trade deficit. So ସେଇ କେସରେ ମାନେ it is government ensures in a very strict way that foreign exchange is not misused. ତ ସେଇ ଜାଗାରେ director can be arrested and put in jail. Okay, 3 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, but I should leave. Thank you. ସଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ ରହିବ କି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ, ସଣ୍ଡେ ଦିନ ମୁଁ ଆଜି ମ୍ୟାଡମକୁ କହିଛି 9ଟାରୁ 10:30, କାହିଁକିନା କାଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଖାଲି, ତ ସଣ୍ଡେ ଦିନ 9ଟାରୁ 10:30 ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଯୋଉ 6ଟାରୁ 7ଟାରୁ 8ଟା କ୍ଲାସଟାକୁ ସକାଳେ ନେଇଯିବି. ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡମ, କାଲି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆଉ କାଲି ସାର୍ ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅଛି ମିଟିଂରେ ସାର୍, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେବି. ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ପିଲା ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସ 9ଟାରୁ 10:30 ହବ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ କ୍ଲାସଟା 6ଟାରୁ 7ଟା ସିଏମଏ, 7ଟାରୁ 8ଟା ଏମଇ ହେଇକି କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ. ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ସେ ଆଜି ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ସେଟା ଟିକେ ସାର୍କୁଲେଟ କର. ଆଇ ୱିଲ୍, ହଁ ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରୁପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ସାର୍. ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍. Very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. So, after a gap of 2 days, today we'll go to discuss about some aspect of managerial economics. In the last class, we discussed about the concept of demand analysis. And in that, we tried to find what is the importance of demand analysis. Hello? Is it audible?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, it's audible. Okay. So in the last class, we discussed about the concept of demand analysis, where we found that how the demand analysis is important for business decision making process. It's not only for business decision, but for all sorts of decision taken at the household level or at the government level or at the business level. It is imperative that every decision maker must have to have some familiarity about the concept of demand analysis. So in that context, we went on to discuss about the basic law of demand, where we found the relationship that exists between the price of a particular product and the corresponding demand for that product. And we concluded that there exists an inverse relationship, which is a general thing which is known by almost all. Even a tiny shopkeeper also knows that fact. But we discussed why such inverse relationship happens. What is the basic causes which are responsible for causing the inverse relationship between the price of the product and the quantity demand of the product. So in total, you can say that in the last class, whatever we discussed about one major thing, that what is the direction of change in quantity demand for a particular product whenever there occurs a change in the price of that product. And we found that the quantity demand for the product changes in the negative direction as the change occurs in the price of the product. But when we try to discuss about the business decisions, mere knowledge of the direction of change in the quantity demand is not enough on our part to take any decision. We need to find out what is the magnitude of change or extent of change that can occur to the quantity demand of a product whenever there occurs a change in any of the determinants of demand for that product. Because we have already pointed out in the last class that there can, apart from the price of the product, there can be numerous factors which have their influence on the demand for a particular product. Like we discussed about the income of the consumer, we discussed about the prices of the related products, we discussed about the taste and preferences, we discussed about the advertisement expenses. So whenever there occurs any change in any of these factors, definitely the demand is going to be changed. But by how much the demand will change, that is to be identified while taking some decisions, particularly in business perspective. So in that context, we need to have some familiarity about a concept which can help us in guiding to find out what is the magnitude of change or what is the extent of change that can occur in the demand for a particular product whenever there occurs any change in the determinants of demand for that product. That concept is known as your elasticity concept. You know what is elasticity? Whenever we talk about any object and we consider that object as an elastic object, we can say that the object is supposed to be an elastic object if it can easily be stretchable. Either it can easily be expanded or it can easily be contracted. Here we are supposed to talk about the elasticity of demand. Means expansion of demand and contraction of demand. So whenever there occurs any change, either in the price of the product or in the prices of related products or in the income of the consumer or in the advertisement expenses or in the taste and preferences of the consumer, the demand for that particular product is supposed to change either by way of being increased or being decreased. Increment in demand refers to the expansion of demand, and decrement of demand refers to the contraction of demand. So by how much the demand can either be expanded or contracted whenever there occurs a change in the determinants of demand for that product, we will discuss that today through the elasticity of demand concept. Let me share something with you.
Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So here we are trying to find out what is elasticity of demand. As I have already pointed out to you, that elasticity of demand basically refers to the responsiveness of demand for a particular product to any change that occurs in any of the determinants of demand for that product. And since we know the determinants can be many, but for the simplicity of our study, here we try to take into consideration only three major determinants. One is, of course, the price of the product, because we know that psychologically the individual consumers are driven by the fact that whenever they go to purchase any product, the first and foremost thing that they look at is the price of that product. Whether that price is affordable on their part or not, whether the price is supposed to be more expensive for them or less expensive for them, that they need to know. So the first and foremost thing they look at while trying to purchase any product is the price of that product. The second thing, as I have already pointed out in the last class, that it is the pocket size of the consumer which ultimately decides how much the consumer will purchase of a particular product. And the pocket size of the consumer depends upon the income of the consumer. The more the income a consumer has, the more the consumer will be intended to purchase more. Similarly, some other factors, like as we have already pointed out, that in this modern day business world, every product has its own substitutes, as well as some products are having their complementary products being available in the market. We pointed out the fact that two products are supposed to be complementary to each other when the use of one product is not possible without the use of the other product. That means we have to use both the products in tandem or simultaneously. Similarly, two products are supposed to be substitutes to each other if one product can be well replaced by another product. That means for whatever purpose you want to use one product, if for that particular purpose you can use some other product, then both the products are supposed to be substitutes to each other. And in this modern day business world, every product has its own substitutes being available in the market. And some products are having their complementary products. So any change in the prices of these complementary products or substitute products will definitely make a change in the demand for a particular product. So that we are actually explaining when trying to find out how the demand for a particular product changes, or by how much the demand of a particular product changes when there occurs a change in the prices of its related products, either complementary or substitute. So accordingly, for our study, we will focus on three major elasticities, although there can be numerous types of elasticity of demand, because we have already pointed out there are different or numerous factors which can affect the demand for a particular product. But for the simplicity of our study, we'll focus on three major types of elasticity, where we are trying to take into consideration three major factors. One major factor is no doubt the price of the product. The second major factor is the income of the consumer. And the third major factor is your prices of related products. So when we take into consideration the price of the product, which every consumer must have to take into consideration while trying to take a decision regarding purchasing of a product, we are discussing about the price elasticity of demand. So if you want to know what happens to the demand for a particular product, when there occurs a change in the price of that product, you are supposed to be involved in estimating the price elasticity of demand, which is considered to be the most important aspect in the elasticity concept. Similarly, secondly, we need to find out what would be the likely change in the demand for a particular product when there occurs a change in the income of the consumers. If consumers' income increases, how the demand for product by that particular consumer will change. If income of the consumer decreases, how the demand for a particular product will change, and by how much the demand will change. For that, we are supposed to be involved in estimating the income elasticity of demand.
Third factor, we are taking into consideration the prices of related products, either the price of the complementary product or the price of the substitute products. So we try to find out what happens to the demand for one product when there occurs a change in the price of any of its related product, whether the related product is in the form of complementary product or in the form of substitute product. So in that context, we try to estimate the cross elasticity of demand. So these are the three major types of elasticity that, for the simplicity of our study, we try to understand, we try to identify. One is price elasticity of demand, one is income elasticity of demand, one is cross elasticity of demand. Apart from that, many other elasticities are there, but for our study, we will focus on these three types of elasticity. When we talk about these three types of elasticity, generally, these three types of elasticity of demand can be expressed in two different ways or two different methods. In one method, we try to find out the point elasticity of demand, and in another method, we try to find out the arc elasticity of demand. So point elasticity and arc elasticity are the two important measures of price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. Now, when we talk about the price elasticity of demand, what we need to find out? We need to find out what would be the likely change that can occur in the demand for a particular product when there occurs a change in the price of the product. And as you know, the unit of measurement of price of any product and the unit of measurement of demand for that product are not the same. They are different. So since the unit of measurement of both independent and dependent variables, here the independent variable is no doubt the price of the product, and the dependent variable is no doubt the quantity demand for the product. So since the unit of measurement of these two variables, that is independent and dependent variable, are not the same, how we can express the relationship, or how we can express by how much the demand will change when there occurs a change in the price of the product. So for that, we generally try to estimate the elasticity of demand in relative terms. By relative term, I mean the percentages term. That means we can always try to find out by what percentage the demand for a particular product can change when there occurs a given percentage change in the price of the product, or in the income of the product, or in the prices of related products. So generally, the concept of elasticity of demand is always expressed in relative terms or percentages terms. And while we try to estimate the price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand, we can estimate it with the help of certain methods, certain formulas which are given. So talking about the price elasticity demand, we can estimate the price elasticity demand by taking into consideration the, you can say that, division between the percentage change in quantity demand and percentage change in price. Here, there is supposed to, or there is supposed to a change to occur in the demand for a particular product. So it is the dependent variable. So generally we express it in a fraction form, whereby in the numerator we take into consideration the change in the dependent variable, and in the denominator we take into consideration the percentage change in the independent variable. So price elasticity demand can be estimated as percentage change in quantity demand for a particular product divided by the percentage change in the price of that product. It is very simple. And generally, when we try to consider the price, a point price elasticity demand, or try to estimate the price elasticity demand through the point method, we use this formula. But sometimes what happens, you need to find out by what range the change will occur in the demand for a particular product when there occurs a change in the price of that product. So there we have to take into consideration the
relative changes that can occur in the price of the product and also that can occur in the demand for the product. So when trying to estimate the elasticity of demand or particularly the price elasticity demand through ARC method, we take into consideration the original change or original price of the product, the changed price of the product, expected change in the price of the product, the original quantity demand for the product, and the expected change in the quantity demand for the product. So here I have written the formula as Q1 minus Q2 divided by Q1 plus Q2 into P1 minus P2 divided by P1 plus P1 minus P2. Here P1 refers to the original price, P2 refers to the expected change in price, Q1 refers to the original quantity demand. That means quantity demand corresponding to P1, and Q2 is the change in expected change in quantity demand, whereby Q2 is basically referring to the demand when there occurs the price of P2. So through this method, we can easily find out what is the value of price elasticity of demand, because we need to find out what would be the degree of change that can occur in the elasticity demand, through which we can come to a particular conclusion, how we can make changes in the price of the product so that whatever we are expecting to change in the demand for the product, that can happen. Similarly, if you take into consideration the income elasticity of demand, you can find out the same formula in terms of price. Here you have to keep the income, percentage change in income, and percentage change in demand will be same. So in the numerator, there will be percentage change in demand, and in the denominator, there will be percentage change in income of the consumer. Similarly, in case of cross elastic demand, where we are taking into consideration two goods, not one good, because we are presupposing the fact that the goods are related to each other, either in the form of complementary or in the form of substitute. Sir, slide So there we are zoom taking. करो. Is it okay? Yes, sir. So in case of cross elastic demand, we are taking into consideration two goods. As we have already pointed out the fact that while doing the demand analysis, we are actually doing the demand analysis for a specific product. But here we are taking into consideration that the product is having its own relative products being available in the market, either in the form of complementaries or in the form of substitutes. So here we are taking into consideration two products. So if any change occurs in the price of one product, how it can make a change in the price of the quantity demand of the other product, that we are estimating through the cross elasticity of demand. So the formula basically reads that in the numerator, we are taking into consideration the percentage change in demand for one product, and in the denominator, we are taking into consideration the percentage change in price of another product, whereby we are presupposing that both the products are related to each other. But thing is that whenever we I'll be zoom करेंगे? नहीं नहीं सर ठीक अधिक जूम ही है सर ठीक है कम जूम जी सर ଏବେ ହେଲା? ଅଧିକ zoom ହେଲେ କଟି ଯାଉଛି sir. यस सर यस Now the fact is that we have already understood what are the types of elastic demand. But when we try to estimate the elasticity of demand in a numerical way, we must have to be familiar with the degrees of elasticity of demand. By what degree, by how much the demand will change. It depends upon the value of the elasticity of demand. And generally, the value of the elastic demand ranges from 0 to infinity. That means at least it can have a value equal to 0, or at best it can have a value equal to infinity. But in general, there are very few products in which case you can find the value to be at 0. And there are also very few products or limited products where you can find out the value of the elastic demand as infinity.
So in normal circumstances, if you look at the general business world or the modern business world that we all are being exposed to, and if you take into consideration the products which are available in this modern day business, all the products actually have two major degrees of elasticity. Although there are five degree of elasticity is being mentioned here, but in most of the cases, we have only 2 degrees of elasticity. That is why we can either express the value in terms of 1, or in some cases, we can express the value in terms of 0. Either the value of elasticity of demand for a product can be less than 1, or it can be more than 1. And in some cases, either it can be negative, less than 0, or it can be positive, greater than 0. Because in cross elasticity, we basically have that value of 0. Either in case of cross elasticity, the value of elasticity of demand for any product can either be negative or it can be positive, depending upon how the two products are related to each other. If they are complementary, then automatically. So here we generally, whatever things have been expressed here, we generally have 2 degrees of elasticity. One is your more elastic demand or relative elastic demand, and another is less elastic demand or inelastic demand. Either a product can have elastic demand or it can have inelastic demand. Although perfectly inelastic, perfectly elastic, and interelastic, such degrees are there in the theory. But in reality, you can find that either a product can have an elastic demand or it can have an inelastic demand. Elastic demand, what does it mean? When we say that a certain product is having elastic demand. So there, first of all, you have to find out that in terms of what we are saying that the product is having an elastic demand. Which factor we are taking into consideration in estimating the elastic demand, whether it is the price of the product or the income of the product or the prices of related products. If we are taking into consideration the price of the product and we are saying that the product is having an elastic demand, that means it is having price elastic demand, which indicates that the demand for any particular product responds properly to the change in price of that product. And the degree of responsiveness is more if it is having price elastic demand. So there the value is considered to be more than 1. It's no doubt a positive value, but the value is more than 1. If you put that formula, percentage change in quantity demand divided by percentage change in price, and if you find the value as a value more than 1, then you can easily say that it is having price elastic demand. But if the value is less than 1, then it is having price inelastic demand. Now the question arises, when the value is more than 1, what does it indicate? It indicates that the numerator is more than the denominator. And in the numerator, we have taken the percentage change in quantity demand. That means percentage change in quantity demand, if is more than the percentage change in price, then we can say that the product is having a price elastic demand. Similarly, if the percentage change in quantity demand is less than the percentage change in price, then we will have a value less than 1. In that case, we can say that the product is having price inelastic demand. Now the question arises, what purpose it will fit if we find the elasticity of demand for any particular product. You have to remember the point that by using the elasticity of demand for any particular product related to the change in price, you can ultimately come out with a proper pricing decision, because you can find out what would be the likely percentage change in quantity demand if you go on to make a particular percentage change in the price of the product. Suppose ଆପଣ 10% ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡଟା କମିବ, କାରଣ ଆମ ଡିରେକ୍ସନ ଅଫ ଚେଞ୍ଜ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଛେ ଲ ଅଫ ଡିମାଣ୍ଡରେ। ଯଦି 10% ଆପଣ ପ୍ରାଇସ ବଢେଇବେ, ପ୍ରାଇସ ବଢିଲା ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ନିହାତି ରୂପରେ କମିବ।
And if you estimate that the demand is supposed to decrease by more than 10%, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଟା ଯୋଉ କମିଯିବ ତା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟା କମିଯିବ। ଯଦି ରେଭିନ୍ୟୁ କମି ଯାଉଛି ତା ଇଫେକ୍ଟରେ ପ୍ରଫିଟ ବି କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଡିସିସନ ଟା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ 10% ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବଢେଇବି, ସେଟା ଦେଖିଛେ ସେଟା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ବାଇ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ ଡିମାଣ୍ଡ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟା ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି, ମୋର ଦେନ୍ 1 ଆସୁଛି, नो डाउट पॉजिटिव दिटा केस रे आसीबो, बट मोर देन 1 जदि आसुची जोटा कि इंडिकेट करूची जे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, से जगह रे यू विल बी कंपेल्ड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। कारण आपण द प्राइस टा को कमौछंती आपनकर डिमांड टा से बढ़िबो आ जेतिकी परसेंटेज रे आपण प्राइस कमेबे तारो अधिका परसेंटेज रे डिमांड टा बढ़िबो, which will ultimately help you in increasing your sales, which can be translated into increment in revenue and ultimately increment in profit. So say for that purpose, we need to know about the elasticity concept. But एठी आपण एक क्वेश्चन करि परंती जे एते सब बिजनेस जो माने करूछंती से माने कोन ए फार्मूला पके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाहर करिवे, कारण मार्केट रे तांगर प्रोडक्ट बिक्री होउची and market is not confined to a particular place. मार्केट टा बहुत भास्ट होउची, सब जगह इनफॉरमेशन केमिति पाइबे, पाई कि ताकू गोटे मेथड रे पके की गोटे फार्मूला पके की बाहर करिवा, इट इज नॉट पॉसिबल ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट। जदियो एटा हम थियोरेटिकली पढुचे, आमे पढिया में आमे प्रॉब्लम कोसिया में हमको एटा सुविधा ही पाए, किंतु रियल वर्ल्ड रे जदि हम देखिबा ताले ए केबे फार्मूला पके की बाहर करो। There are certain factors by looking at which easily you can know whether your product is having elastic demand or having inelastic demand corresponding to price or corresponding to income or corresponding to prices of related products. तेणु जेहेतु मु कहली प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सब इंपोर्टेंट फैक्टर रहउची in the determination of demand for any product. So we have to find out what factors are there by looking at which we can easily know whether our product is having price elastic demand or having price inelastic demand. Then only we can be able to take some decisions whether to reduce our price or to increase our price. In the next slide, we will show those factors by looking at which a business concern can easily find out what would be the elasticity of demand for its product in terms of price. The first factor is your nature of goods. As a business concern, you know what type of product you are dealing with and what is the nature of the product. By nature of the product, we understand whether the product comes under the category of necessary products or comes under the category of luxurious or comfortable products. In the same way, you can also argue the fact that there are some products which can be necessary to somebody or some individuals, but at the same time, that same product can be considered as a luxury for some other consumers. So you cannot directly define whether a product is necessary product or a luxurious product. Although there are certain products which are supposed to be necessary for almost all consumers, like on a daily basis in our household for preparing some dishes, we use some products like salt or like oil or like sugar. We are using it on a daily basis. So whatever product we are using, the same product is being used by everyone. It's not that कि जो माने rich रहिले से माने लुणो खाऊ नांती कि बहुत अधिका ये लुणो खाऊ कम खाऊ. But thing is that सही product को हमें necessary product कही परियो. ताका nature तो share होउछ. But most of the cases में देखा जाए जे केतोडे product necessary हेई पारे for some consumers, but at the same time the same product can be a luxurious product for some other consumers. Like suppose आपण रहुचंती गोटे मेट्रो सिटीज रे जोठी की डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बहुत दूर रहउची, आपन को फोर व्हीलर टा गोटे नेसेसरी हे पारे, टू व्हीलर टा गोटे नेसेसरी हे पारे, बट जो माने विलेज एरिया रे रहउचंती, जो माने डाउन टाउन एरिया रे रहउचंती, ताका पई व्हीकल टा एटा नेसेसरी नुई.
So for them, the vehicle is not a necessary product. But for those who are living in the urban areas, particularly in the cities or in the metro cities, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା necessary. ଆମେ ଆଜିକାଲିକା climate କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, those who are living in the cities, most of the people are preferring air conditioners or air coolers. কিন্তু that is not the case happening in the village areas or in the slum areas. କାରଣ ସେଠି ବି consumers ଅଛନ୍ତି. ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା luxurious product. ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା necessary product. ତେଣୁ କୋଉଟା କାହା ପାଇଁ necessary product, କାହା ପାଇଁ luxurious product, ସେଟା as a business concern we understand the fact. ଆମେ ଆମର consumer କିଏ, we know that. Whether for our consumer, our product is a necessary product or a luxurious product, we also know that. So by looking at the nature of the product, you can easily find out. ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ necessary product ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ the elasticity of demand for that product in terms of price is supposed to be price inelastic. କାହିଁକି inelastic ଆମେ କହୁଛେ, କାରଣ ଯେହେତୁ necessary product, ଯାହା ବି price ହେଲେ ବି consumer କିଣିବ। ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେଇଲେ ବି କନଜ୍ୟୁମର କିଣିବ, ପ୍ରାଇସ୍ କମେଇଲେ ବି କନଜ୍ୟୁମର। ସେଇଥିରେ କହିପାରିବେନି ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ କମେଇଦେଲି ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢିଯିବ, ନା, କାରଣ ସେଇଟା ନେସେସରି ପ୍ରଡକ୍ଟ। ପ୍ରାଇସ୍ କମିଲେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ କିଣିବେ, ଯାହା ଯୋଉମାନେ କିଣୁଥିଲେ ଆଗ, ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଲେ ବି କିଣିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ନେସେସରି ପ୍ରଡକ୍ଟ। ବଟ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଯେ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ yours is having a price elastic demand. ପ୍ରାଇସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ କିଛିଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ ରେ, ତାଠୁ ଅଧିକା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ ନେସେସରି ପ୍ରଡକ୍ଟସ, ଦ ବିଜନେସ କନସର୍ନସ must have to come with a solution that if they go on to increase the price, the revenue is supposed to be increased, because the demand is not going to be changed that much, because the product is a necessary product by nature. But the opposite happens in case of luxury products or comfortable products. If you can identify that whatever product you are dealing with and the consumers that you have for your product are considering it as a luxurious product, then there, if you want to increase the sales of your product, you need to reduce the price of your product. Only then you can increase your revenue. Otherwise, your revenue will not be increased. So by looking at the nature of the product only, you can find out whether your product is having elastic demand or having inelastic demand. But this is not the single factor by looking at which you can take the ultimate decision. There are some other factors also. The second factor is your availability of substitutes. We have already pointed out the fact that in the modern day world, each and every individual product is having its own substitutes being available in the market. ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ your mobile phone is considered to be necessary product for all. କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ନେବା, ଆର ବହୁତ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଛି, because many companies are there which are coming out with the handsets. ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆର ବହୁତ varieties ରହିଛି, so all the different varieties are considered to be substitutes to each other. So automatically ଯୋଉ product ର ଅଧିକା substitutes available ଥିବେ ମାର୍କେଟରେ, ସେଇ product ର elastic demand ଟା elasticity of demand ଟା elastic ହବ। ଯଦି price elastic ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ whether your product is having price elastic demand or not, and if you identify the fact that your product is having many substitute products of it being available in the market, you can easily conclude that your product is having an elastic demand. ଯଦି ବି କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ କମ୍ପିଟିଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କନଜ୍ୟୁମର ସୁଇଚ ଓଭର କରିଯାଇ ପାରନ୍ତି ଅଦର ପ୍ରଡକ୍ଟ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇସ ଟା ବଢେଇବେ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆପଣ କମ୍ପିଟିଟର ପ୍ରାଇସ ବଢେଇବେ, ସିଏ ତ ଅନେଇକି ବସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବଢଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କମିବ, ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ତା ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବ, ତା ମାର୍କେଟ ସେୟାର ସିଏ ବଢେଇବ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ସ ଆର୍ ବିଂ ଆଭେଲେବୁଲ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ, the more the substitutes a product has in the market, the more is the elasticity of demand for that product. And in that case, you need to reduce the price of your product if you want to increase the sales of your product. On the other hand, if you have identified that your product is having very less number of substitutes being available in the market,
केते गोटे प्रोडक्ट एमती अछि जहार कि सब्स्टिट्यूट्स बेसी नाहन जो गुडा आमे कहि परिबा सपोज लाइफ सेविंग ड्रग्स तो तार बेसी सब्स्टिट्यूट्स ना जो माने डायबिटिक पेशेंट सिवियर डायबिटीज अछि जो नकर से माने इंसुलिन ऊपर डिपेंडेंट हो जदी इंसुलिन नो बेसी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ना तो से जगह गुडा अगर हम देखियो जे दोज प्रोडक्ट्स आर हैविंग inelastic demand in the sense that if you go on to make any change in the price of those products the demand for those products will not change by that much because those products are having less number of substitutes of them being available in the market. So any product, if having less number of substitutes being available in the market, that product is supposed to have inelastic demand. There, as a business concern, when we go on to decide about the price, or when we go on to take some decision regarding pricing, we have to reduce the price, we have to increase the price of the product in order to increase the revenue because we know that our product is having inelastic demand. So जदि भी हमें 10% बढ़ाऊचु प्राइस रे our demand टा इतने चेंज हबनी less than 10% चेंज हब तेणु हमर रेवेन्यू बढ़िबो डिमांड टा इतने अफेक्टेड हबो नाही सेल्स जा होउछ हम राइट तेणु सेटा होची सेकंड फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स थर्ड फैक्टर is income of the consumer. If income कहले basically we understand the fact that income here is referring to the real income. It's not the monetary income. मुझे आपको last class रे भी कहिथिली जे monetary income is the absolute amount of money that we receive on a periodical basis, either monthly basis हो कि quarterly basis हो हमें जो absolute amount टा पाउछ सेटा होची monetary income. ଆପଣ suppose ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦରମା 1 lakh rupees a month ଅଛି so automatically that 1 lakh rupees is your absolute amount of income, that is your monetary income. But what matters while taking a decision regarding the demand for any product is the real income of the consumer, and real income is nothing but the value of the monetary income, what the monetary income can purchase in the market. जो लाख टका आपण पाउछथि से लाख टकार वैल्यू मार्केट रे केते कारण हमें जानि छे वैल्यू ऑफ मनी टा चेंज ही जाए विथ द पैसेज ऑफ टाइम आज आपनकर 100 टकार वैल्यू जहां अछि वर्ष पर आपण देखिबे 100 टकार वैल्यू से नथियो तातो कम रहे आपण जे ऑब्जर्व करथिबे 5 वर्ष तळे आपण गोटे गाड़ी किनुथले जोटा आपण 50000 रे मिलसला सेम गाड़ी आज जे आपण किनिबे दैट इज बीइंग वर्थ 1 लाख रुपीस और मोर देन तामाने से 50000 वैल्यू 5 वर्ष तले जहां थिला आज के डेट रे लाख टकार वैल्यू से तो 50000 वैल्यू जहां थिला 5 वर्ष तले आज के डेट रे जते देखा ता वैल्यू ऑटोमेटिकली कम जाई तो एठी हमें कहउछे रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर मैटर्स द मोस्ट नॉट द मॉनेटरी इनकम रियल इनकम जदी बढ़िला ताले परचेजिंग कैपेसिटी गोटे कंज्यूमर रो बढ़िला जदी परचेजिंग कैपेसिटी कंज्यूमर रो बढ़िला देन ऑटोमेटिकली तार डिमांड बढ़ी as a business concern you need to look at the real income of your consumers. If you find that the real income is supposed to increase, then you can increase the price of the product because you know that your consumers are supposed to pay more because their real income is going to be high or going to be more. So that income of the consumer also affects the price elasticity of demand or the elasticity of demand. The more the real income, the more will be the inelasticity of it. The less if the real income is more, or if the real income of the consumers are supposed to be more, then you can go on to increase the price of the product because you know that your product is having less elastic demand as compared to the income of the consumer. Then comes the habits. As we have already pointed out that any change in habit can make a change in the demand for a particular product. Our habituated अछंती आजिकल के जुगरे लोक माने habituated अछंती जो इंटरनेट सर्विसेज तेणु जल्दी आपको गोटे कंपनी डाटा प्रोवाइड करूची फॉर ए पीरियड ऑफ 30 days आपण habituated हे फ्रीली मो पाउची जदि ता पे पैसा अधिक दवा पड़ियो तो ऑटोमेटिकली आपण कमे जेमते हमर आगो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करथुलु कम पैसा हम यूनिट पिछा दउथुलु अधिक यूज करथुलु बट जदि टैरिफ बढ़ी गला तो हमर हैबिट रे भी हम चेंजेस किछि करियो सिमिलरली
যেତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ କନଜ୍ୟୁମ କରୁ ହାବିଚୁଏଟେଡ ହେଇଯାଉ କିଛି पर्टिकुलर प्रोडक्ट को से हैबिट को ଆମେ गिव अप करू ऑटोमेटिकली demand for that product will go down on the part of the consumers when they go on to give up those earlier habits. You know, any change in habit can also affect the elasticity of demand for any product. যদি habitଟା constant ରହିଲା same ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ the product is having inelastic demand. ଯଦି habitଟା change ହେଇଗଲା the product is having elastic demand. Then variety of uses, deferred consumption, market awareness is ସବୁ factor ଗୁଡା ମଧ୍ୟ affect କରୁଛି ଆମର elasticity of demand କୁ. So by looking at all these factors, you as a business person you can easily identify whether your product is having elastic demand or inelastic demand. ଆପଣଙ୍କ formula କିଛି ପକେଇବାକୁ ପଡିବ. As a business concern, you know about all these factors. You know about the nature of your product. You know about the availability of substitutes of your product. You know about the real income of your own consumers. You know about the habits of your consumers. You know about the variety of uses of your consumers. କାରଣ variety of uses ଯୋଉ କହିଲି, suppose ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଗ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଟେଲିଫୋନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ସ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ପିକ୍ ଆୱାର ଅଫ୍ ପିକ୍ ଆୱାର ଟ୍ରଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଆସିନଥିଲା ଅଦର ଫର୍ମସ ଯୋଉଟା ଆଜିକା ଡେଟରେ ଅଛି ତ ଯଦି ପିକ୍ ଆୱାରରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଟ୍ରଙ୍କଲ ପାଇଁ ଯଦି ନନ୍ ପିକ୍ ଆୱାରରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟୁଜ ଆପଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ଯଦି ୟୁଜ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇନଇଲାଷ୍ଟିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଯଦି ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ଇଲାଷ୍ଟିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବ So you need to understand what is the habit of your consumers, what is the use of your product by your consumers, whether your consumers are supposed to defer the consumption of your product if any you can say that wrong things happen or if any mishappenings happen ଯଦି ସେମାନେ କନଜମ୍ପସନ କୁ ଡିଫର କରିଦଉଛନ୍ତି ସପୋଜ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦାମଟା ହଠାତ୍ ବଢିଗଲା ଆପଣ ନା ଏଇଲେ ମୁଁ କିଣିବିନି ୱେଟ୍ କରିବି ପ୍ରାଇସ୍ ଆଗକୁ କମିଲେ ମୁଁ କିଣିବି ତ ଆପଣ ଡିଫର କରିଦେଲେ ସେଠି ତେଣୁ ଆଜ ଏ ବିଜନେସ କନସର୍ନ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ୱେଦର ୟୁର କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ଆର ଗୋଇଂ ଟୁ ଡିଫର କନଜମ୍ପସନ ଅଫ ୟର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅର ନଟ ଇଫ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସୋ ତାହେଲେ ଯଦି ଡିଫର କରିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଇଲାଷ୍ଟିକ ହବ ଯଦି ଡିଫର କରିପାରୁନଥିବେ ଏଇଟା ଅଟମୋଷ୍ଟ ନେସେସିଟି ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଠି inelastic demand assume. So these are some of the factors by looking at which you can easily find out whether your product is having elastic demand or inelastic demand and accordingly you can take the pricing decisions. Jodi elastic demand apan dekhuchନ୍ତି you can go on to reduce the price of the product. Jodi apan dekhuchନ୍ତି nahi my product is having an inelastic demand either in terms of price or in terms of income or in terms of price of related product ସେଠି ଆପଣ ବଢେଇ ପାରିବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟାକୁ so that your revenue can increase ତେଣୁ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଯେହେତୁ we are trying to understand the concept of elastic demand as students we are going through the formulas but in real world situation as a business concern they don't go by the formula they basically go through all these factors that is being shown in this slide and by looking at those factors they can easily identify whether their product is having elastic demand or inelastic demand so above all you can say that the concept of elasticity basically helps in pricing decisions in businesses whenever we go on to take some decisions related to pricing the first and foremost thing that we look at is the elasticity of demand what type of elasticity our product has whether it is having elastic demand or having inelastic demand after identifying that then only we can go to decide about the pricing and pricing is considered to be one of the major areas in the business decision making process कारण आमे जो production करूचे जो product either good हो कि service हो ultimately हमको तो बिकिବାକୁ ଅଛି तो बिकिବାକୁ हेले हमको ଗୋଟେ price fix କରିବାକୁ पड़िବ it's not that कि हम थरे बिकिदेलु जो product हमें deal କରୁचे हमें जब business करू we try to survive over a long period of time we try to sustain over a long period of time ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ
ଆରମ୍ଭରୁ ଶସ୍ତାରେ ବିକିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମର କନଜ୍ୟୁମର ବେସ୍ ବଢି ଯାଉଛି ଆମେ ଏଥିକୁ ବଢେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କନଜ୍ୟୁମରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଇଲାଷ୍ଟିସିଟିଟା କଣ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ତାର ଇଫେକ୍ଟରେ ଡିମାଣ୍ଡଟା କେମିତି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବ ଯଦି ସିଭିୟରଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ ନ ହବ ଯାହା ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ହବ ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେଇବୁ ଯଦି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ନ ବଢେଇବ ପ୍ରାଇସ୍ କମେଇବା ଦରକାର in order to increase the sales ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ କମେଇବୁ এটা ডিপেন্ড করছে এইসব ফ্যাক্টর উপরে তেଣୁ as a business concern in the real world situation we need to go through all these factors because with the help of these factors we can ultimately find out whether our product is having elastic demand or inelastic demand because that can ultimately help us in deciding about the price of the product. So this is all about our elasticity concept. Another concept in the demand analysis is your demand forecasting. As I have already pointed out the fact that businesses are supposed to sustain over a long period of time. So they need to plan for their future. And planning is being done at all levels. For that reason, they need to identify what would be the likely demand for their product in times to come. So that earlier they can be prepared and accordingly they can produce that amount of output or that amount of the product. ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ 2 ମାସ ପରେ କି 3 ମାସ ପରେ ଆପଣ ବିଜନେସ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ରହିବ in the next 3 months or 6 months or 1 year. So for that reason ଆପଣଙ୍କୁ forecast କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଡିମାଣ୍ଡଟା କେତେ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି because on that basis you will ultimately take some decisions related to production related decision ଆପଣ ନେବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବି ନା ନାହିଁ କାରଣ ଆଗକୁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମତେ ଅଧିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବି 3 ମାସ ଯାଏଁ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଷ୍ଟ ମେ ବି ସେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇପାରେ ମୁଁ ଯଦି ଏବେଠୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକି ତାକୁ ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀରେ ରଖିଲି ତାକୁ ଷ୍ଟକ୍ ହିସାବରେ ରଖିଲି ମୋର ସେଇ ୱେୟାର ହାଉସିଂ ସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସଟା ଅଧିକା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବି ମୁଁ ଅଧିକା ପ୍ରଫିଟ ନେବି ତେଣୁ କୋଉ ସମୟରେ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ମୁଁ କରିବି ମୋର ପ୍ରଡକ୍ଟର for that we need to understand what would be the likely demand in future times to come. तो जो demand forecasting रहुची एठी हमें बेसिकली हम प्रोडक्ट रो डिमांड को एंटीसिपेट करूचे जे फ्यूचर रे हम प्रोडक्ट रो डिमांड ता कोन रहिबो कारण फ्यूचर हम जाने जे कंप्लीटली अनसर्टन और फ्यूचर रे केतले कोन होबो nobody knows that. Therefore against some uncontrollable and competitive forces we have to take a decision. ତେଣୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ କରିବା ଯେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଆମ ଗୁଡ୍ସ ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛେ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡଟା କେତେ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଅଣ୍ଡର ଏ ସେଟ୍ ଅଫ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବଲ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଫୋର୍ସେସ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛେ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟା କେବେ ହେଲେ 100% ଆକ୍ୟୁରେସି ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛେ at the same time we are also of the opinion that future is uncertain କାରଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଆସିଯିବ ଯୋଉଟା କି ବିଜନେସ ପାଇଁ ଭଲ ନ ହେଇପାରେ so in that context you have to take a decision ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟୁଚରଟା ଅନସର୍ଟନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଯୋଉ ଫୋରକାଷ୍ଟଟା କରିବା ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ that might not be 100% accurate but we try to get as much accuracy as possible. For that, we need to forecast the demand in a proper way. ତେଣୁ ଯଦି ଆମର demand forecasting ଟା as much as possible accurate ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ decision ନେବା related to production ସେଟା right decision ହବ So for that reason ଆମେ କହିଛେ ଯେ accurate demand forecasting is essential for a farm to enable it to produce the required quantities at the right time and arrange well in advance for various inputs.
Therefore, whenever we go for forecasting of demand for our product, we need to ensure that whatever forecasting we are doing, the forecasting is supposed to be as much accurate as possible. Although it cannot be 100% accurate, but it can be 95%, 96% accurate, as much as possible. Similarly, when we try to have the demand forecasting, particularly suppose in some particular sectors, then we need to take into consideration the unforeseeable forces as well as the uncontrollable forces into account and try to find out the demand forecasting. What is the use of this demand forecasting? Demand forecasting basically helps an organization in taking various business decisions such as planning the production process, purchasing of raw materials, managing of funds, because funds are outflown as well as funds are inflowing to the company. So, upon the fund management the proper no କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ you will be in trouble in business. So, proper fund management ପାଇଁ our demand forecasting ଟା ନିହାତି ରୂପରେ ଦରକାର. And most importantly, ଯେତେବେଳେ ଆମେ products ର price ଉପରେ ବି decide କରିବା, ଆମକୁ demand ଟା forecast କରିବାକୁ ପଡିବ. ଯଦି ଆମେ forecast କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ demand ଟା ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି, that means ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ craze ରହିଛି ଆମ product ର demand ପାଇଁ. So if you want to increase the price, then we can have more revenue for it. So pricing decision ରେ ମଧ୍ୟ help କରିବ ଆପଣଙ୍କ demand forecasting ଟା. ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଯେ କଣ ମେଥଡ ରହିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ର। ଏ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ମେଥଡ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଡିମାଣ୍ଡ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଟା ବେସିକାଲି ଦିଟା ମେଜର ମେଥଡ ରେ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମେଥଡ କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଓପିନିଅନ ପୋଲିଂ ମେଥଡ, ଯୋଉଟା କି ମେଥଡ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ହଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମେଥଡ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ମେଥଡ ବୋଲି ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। Quantitative method, we generally take into consideration certain past data, and by using those past data with the help of certain statistical tools and advanced mathematical tools, we try to extrapolate the demand for our product. जे भविष्यତରେ ଆମର demand କଣ ହବ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଡାଟା କୁ କନସିଡରେସନ ନବା, ସେ ଡାଟା କୁ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଭିତରେ ଆମକୁ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେ ମଡେଲରେ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ କରିବା, ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଟୁଲ୍ସ, ତାପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଏଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ମେଥଡ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଗୁଡେ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ମେଥଡ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ, ଯୋଉଟା ଇନ ଜେନେରାଲ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜନେସ କନସର୍ନ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ଏଥିରୁ। କାରଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ମେଥଡ ଯଦି ୟୁଜ କରିବେ, ଡାଟା କେତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବଲ ନଥାଇପାରେ। ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଗୁଡା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ଡାଟା ନଥିବ, ସେ କେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବେ? ତ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ମେଥଡ କୁ ଯିବେ। जो क्वालिटेटिव मेथड रहुची बा ओपिनियन पोलिंग मेथड रहुची, एतरे आपनकर किछिटा मेथड रहुची जब हम कहू सर्वे मेथड। तो सर्वे मेथड जो रहुची, सर्वे मेथड रे हमर कंज्यूमर सर्वे गोटे आसुची। जे कंज्यूमर को हमें सर्वे करी, थ्रू ए सर्वे वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द कंज्यूमर्स वांट, व्हाट द कंज्यूमर्स रिक्वायर, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान फॉर दैट। ये जो सर्वे मेथड रहिला, एटा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो सर्वे मेथड ता बेसिकली एठी हमें सर्वे कहार करूचे ना कंज्यूमर मानकर करूचे। तो आपण कहबे जे केते गोटे कंपनी अछि सर, जो मानकर की प्रोडक्ट इज बीइंग यूज्ड बाय क्रोर्स ऑफ पीपल। तो हमें यदि सर्वे करिबा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को पाखु जिबा, इट विल टेक मच मोर टाइम। तो से जगह तो এটা पॉसिबल नहीं। सेति पे हम कहूजे जे कंज्यूमर सर्वेटा दीटा डिफरेंट वे रे हम सर्वे करते। जदि हमरो छोट ऑर्गेनाइजेशन अछि, हमर प्रोडक्ट रो जो माने कंज्यूमर दे आर कन्फाइन्ड टू ए नंबर, गोटे नंबर हमें सपोज पाउजे 100 टू 1000 पाउजे। हमें भाबुचे जे सेई मानक पाखु इंडिविजुअल हमें जाई परिबो विद इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम।
ताहले we can go for a complete enumeration survey जब हमें population survey लिखो जदि हम देखिए हम कंपनी बड़ो हमर प्रोडक्ट ता सब जगह अवेलेबल होची हम प्रोडक्ट रो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन thousands of crores रे अछंती कि माय hundreds of crores रे अछंती कि माय crores रे अछंती जोटी कि possible नुहे on our part to reach to each and every individual customer. So in that case we can go for a sample survey method. ए sample survey method रे आउ गोटे पार्ट हमर आसुची हम टेस्ट मार्केटिंग बिल मध्ये कहउचे जोटी कि हमें मार्केट रे हम प्रोडक्ट को लॉन्च कला पूर्वरु हम गोटे पर्टिकुलर एरिया नै कि सेठी हम टेस्ट मार्केटिंग करी जो मान को हमर कंज्यूमर बिले हमें भाबुची जो एज ग्रुप रो कंज्यूमर रहउछंती जो इनकम ब्रैकेट रे कंज्यूमर रहउछंती जो एरिया को मैं आइडेंटिफाई करले वी हैव टू एंश्योर दैट से एरिया रे से सब प्रकार कंज्यूमर अछंती सेठी हम टेस्ट मार्केटिंग करिया जदि टेस्ट मार्केटिंग रे सक्सेसफुल हेले ताहले हमें मार्केट को हम प्रोडक्ट सेही थ्रू हमें जानि परियो डिमांड फोरकास्टिंग ता कोन होउची so complete enumeration रे we are trying to reach to each and every individual consumers into sample survey रे we are trying to reach a fraction of the total population किंतु sample survey जदि देखा जाउची जे अल्प समय रे हेई जीवो किंतु जो sample selection हमें करियो the selection of sample is considered to be much more tedious on the part of any organization कारण से सैंपल भितरे हमकु सब प्रकार कंज्यूमर को नवा बिटे जदि सेठी हमें भूल कर देले तले हमर एस्टिमेशन भी भूल हे हमर डिमांड एस्टिमेशन बा डिमांड फोरकास्टिंग भी भूल हे तो ये जो सैंपल सर्वे हमें करूचे सैंपल सर्वे रे वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन सम सिलेक्टेड कंज्यूमर्स और ओनली फ्यू कस्टमर्स तांको व्यू को नौचे तांको व्यू को बेस करिकि हम डिमांड फोरकास्टिंग ता करी आ गोटे मेथड रहछि जाको हम एंड यूज मेथड बिली कहउछि तो एटा बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स जोड़ा आपनकर वर्क इन प्रोग्रेस रे रहिथिबो जोड़ा फाइनल गुड्स में जोड़ा कि कंज्यूमर माने कंज्यूम कर परिबे नाही से केस रे हम करू द सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट आर प्रोजेक्टेड थ्रू ए सर्वे ऑफ इट्स एंड यूजर्स जदि आपण कंज्यूमर सर्वे देखुछन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपनकर अधिका जदि सैंपल नेबे भी सैंपल साइज भी आपनकर अधिका आसी जाउछि it's not possible to go to each and every individual consumers who are coming under the sample कारण आपण डिमांड फोरकास्टिंग मु कहली 3 मास पे करि परंती 6 मास पे करि परंती वर्ष पे करि परंती ता भीतर गोटी गोटी कंज्यूमर गला वाला भी टेक मच मोर टाइम एंड मच मोर एक्सपेंसिव तो से जगह रे आपण सेटा को इग्नोर कर दे कंज्यूमर सर्वे मेथड को इग्नोर करके आपण सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड ता ने सेल्स फोर्स ओपिनियन ने आपण कोन करछ ना आपण को जो माने सब सेल्स फोर्स अछि लाइक फील्ड लेवल रे आपनकर अछंती के रिप्रेजेंटेटिव्स अछंती मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स रहिसंती ताको ऊपर आपनकर मार्केटिंग मैनेजर्स किछि रहिसंती तो जो माने सेल्स संगे जडित सेल बिकॉज़ दे आर कमिंग डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ द कंज्यूमर्स सेल्स फोर्स भितरे आपण रिटेल शॉप ओनर्स को भी नहीं परंते जो माने आपण प्रोडक्ट बिक्री करछंती होलसेलर को भी नहीं परंते बिकॉज़ दे नो द पल्सेस ऑफ द कंज्यूमर्स जो माने फील्ड रिप्रेजेंटेटिव अछंती सेमानंकर भी नहीं परंते तो एटा कोन कि ओटे इंटरनल वे रे आपण करूछंती सर्वेटा जोठी केवल सेल्स फोर्स को ओपिनियन ता को नेकी आपण देखिया को चाहछंती जे कोन डिमांड हेई परि भविष्य जदि सेक्टर को भी न करछंती वो देखछन जे भाबुछन जे सेल्स फोर्स को जदि वो कंसीडरेशन देबी देयर माइट बी बायस कारण समस्त निज चाकरी बंचे को चाहिए आपण कहबे एटा करि कि दियो ये फील्ड को न जाई कि बस कि गोटे कोन करि दे दे आपण कहबे एटा ठीक अछि भाबिबे ये एक्चुअली सेटा ठीक डाटा अछि तो से जगह रे आ गोटे मेथड यूज कर परियो जे हम डेल्फी मेथड कहू एटा आपण वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रे पर्टिकुलरली इंडिया बाहर गुडे कंट्री रे कंपनी मानिया को अडॉप्ट करछ डेल्फी मेथड रे आपण ना कंज्यूमर को पाको डायरेक्ट जाउछंती ना सेल्स फोर्स को ओपिनियन नउछंती रादर you are taking into consideration the opinion of the experts in the relevant sector in which you are doing your business. तो सेमानकर ओपिनियन नउछंती डेल्फी मेथड चारि पांच जन एक्सपर्ट आपण बाछिले एक्सपर्ट मानन को बसेले
जेपर्यंत सब जगह एक्सपर्ट गोटे कन्सेंसस रे न पहुंचନ୍ତି से प्रोसेस चालू ultimately ସେମାନେ ଗୋଟେ decision ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ on that basis you can find out what will be the likely demand for the product. So these are some of the qualitative methods. Quantitative methods ଯଦି ଦେଖିବା statistical method जोड़ा ରହୁଛି जोଥିରେ ମୁଁ କହିଲି कि statistical tools ଆମେ यूज କରୁଛେ ଆମର डिटेल्स को ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ओवरऑल ମନେ ରଖିଥିବା ଯେ କୋଉ କୋଉ मेथड यूज हुए କାରଣ ଏଠି ଆମେ statistical tools यूज करू टाइम सीरीज एनालिसिस बेसिकली यूज करू रिग्रेशन एनालिसिस यूज करू कोरिलेशन एनालिसिस यूज करू तो एठी हमरे हेई पारे कोन ना ଗୋଟେ ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड आସୁଛି ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड थ्रू रे ଆମେ डिमांड को फोरकास्ट करि परिबा और जदि ट्रेंड प्रोजेक्शन न करूचे बैरोमेट्रिक मेथड रे करि परिबा नले रिग्रेशन मेथड रे करि परिबा नले इकोनोमेट्रिक मेथड रे करि परिबा so these are some of the quantitative techniques or statistical methods through which we can forecast the demand तो कंपनी ऊपर डिपेंड करछि कारण स्टैटिस्टिकल मेथड रे आपण जो डाटा पाइबे आ जो कंक्लूजन बाहरी सेटा बेसी एक्यूरेट हो कारण सेटा डाटा बेस्ड माने नेचुरली आपण पास्ट डाटा को कंसीडरेशन में लेछंती फ्यूचर अनसर्टेनिटी को कंसीडरेशन में लेछंती स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके फाइनली बाहर तो सेटी बेसी एक्यूरेसी आसी एथि पे कोन है ना कंपनी माने थर्ड पार्टी केटा दे दिन जे आपण बाहर करके हमको दियन प्रोडक्ट रो डिमांड कोन हे पारे एथि कंपनी निजे इन्वॉल्व हो नाही तो ओवरऑल खाली मन रखियो जे क्वालिटेटिव मेथड्स रहिछि क्वांटिटेटिव मेथड्स रहिछि जा थ्रू रे हम डिमांड को फोरकास्ट कर परबे कारण डिमांड फोरकास्ट करले एटा हमको हेल्प करियो प्लानिंग रे पर्टिकुलरली प्रोडक्शन प्लानिंग रे हेल्प करियो एंड अल्टीमेटली प्राइसिंग डिसीजन रे मध्ये हमको हेल्प करियो तो फॉर टुडे लेट इट बी विल discuss the other aspects in the next class. Next class तो जो रविवार अछि 7 टा ରୁ 8 टा हबो 8 टा ରୁ 9 टा नहीं संध्या बेला अपन को प्रेजेंट रही तो हेलो कौन हां कौन कंप्लीट एलिमिनेशन में सर कैन यू अगेन रिपीट सेतले वॉइस ब्रेक होतला तो मु ठीक से सुनी पारला कोड पहले कंप्लीट एलिमिनेशन सर how to repeat complete enumeration ना मन रखियो जे ताजी पॉपुलेशन हां complete enumeration ता मन रखियो जे ताजी population survey by population we mean we are trying to take into account each and every individual customer तेनो आपण बिजनेस करूसंती आपणकर नंबर ऑफ कस्टमर केते यू नो इट बेटर जदि आपण देखछन जे आपण जो प्रोडक्ट डील करछन्ती तार नंबर ऑफ कस्टमर ता इज इन ए फ्यू ଗୋଟେ कन्फाइंड नंबर अछि 100 200 300 400 आ एटा पॉसिबल आपण क्षेत्र रे आपण से 300 400 लोकंकर ओपिनियन नै परबे तले सेठी आपण कंप्लीट एनुमरेशन करिवे तो जो माने स्टार्टअप कंपनी रहिसंती नुवा कंपनी आसुचंती तांका पाखे तो प्रीवियस ईयर डाटा फाटा किछ नथिबो तेनो जेहेतु नुवा कंपनी करसंती सेमाने कंज्यूमर क्रिएट करसंती सेमाने डिमांड फोरकास्टिंग करिया चाहे सेमाने कंप्लीट एनुमरेशन को जाय परिबे बट जो गुडा एस्टाब्लिश कंपनी आसले जो ना ऑलरेडी बिजनेस ऑलरेडी किछ वर्ष हलानी जो मानकर कि कंज्यूमर बेस बहुत अधिक रही जायछि से जगह रे कंप्लीट एनुमरेशन सेमाने करि परिबे ना कंप्लीट एनुमरेशन मींस यू हैव टू एनुमरेट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लीटली सेटପାଇଁ कंप्लीट एनुमरेशन बिली कहै छै आपण क्वेश्चनर नै कि जेबे प्रत्येक इंडिविजुअल कंज्यूमर को आपण अटेंड करिया पड़िबो से अनुसार जे क्वेश्चनर जा क्वेश्चन थियो तार पचारिबे तार येटा को रेकॉर्ड करिवे तार बेसिस रे आपण फाइंड आउट करिवे जे डिमांड कोन हेई पारे तो सेटा जदी आपनकर कंज्यूमर बेस ता कन्फाइंड टू ए फ्यू ताहले आपण कंप्लीट एनुमरेशन करबे कारण कंप्लीट एनुमरेशन ता आपण जो रिजल्ट पाइबे दैट इज कंसीडर टू बी 100% एक्यूरेट किंतु एटा पॉसिबल नुहे इन केस ऑफ एस्टैब्लिश्ड कंपनीज कारण सेमानकर कंज्यूमर बेस ता बहुत अधिक कार इन लाख्स अछि कार इन क्रोर्स अछि कार इन 100 क्रोर्स रे भी अछि मल्टीनेशनल कंपनी जो माने विभिन्न कंट्री रे से ऑपरेट करछन जे तार सब कंज्यूमर को से देखियो त तो हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स भी आस करम ताको जीवन सेठी कोन गुटी गुटी घर बुली कर परिबे त से जगह रे सैंपल सर्वे को दियो केतोडे जगह रे जदि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत अधिक आछथि सैंपल साइज ते भी से अनुसार अपन अधिक हम से जगह रे भी पॉसिबल नहीं बुझे ना तो कंप्लीट एनुमरेशन होची पॉपुलेशन सर्वे which means you have to survey each and every individual consumers of your product
ବୁଝିପାରିଲେ? Yes, sir. Okay, let it be for today. We'll meet on Sunday from 7 to 8. Sir, previous So, PDF on screenshot. ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ତ କିଛିଟା so, କରିକି so, ପଠେଇଦେବି ମ୍ୟାମକୁ, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ପେପରଟା ବହୁତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଓଭରଅଲ ଆଇଡିଆ ଦରକାର ହ୍ୱାଟ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍, ଆଉ ଯୋଉ ମେଜର ଏରିଆ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରୁଛେ ସେ ମେଜର ଏରିଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାରିଟି ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। କାରଣ ୱାନ୍ସ ୟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାରିଟି, ଆଇ ନୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍। ଆମେ ତ ଘୋଷିକି ଲେଖୁନେ ନା, ଜିନିଷଟା ଆମେ so ଜାଣିଲେ again, can you? ସେଇଟା। ହଁ, ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ So, ଅଛି ଏଇ ପେପରଟା, ତେଣୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଟା ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାମକୁ ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ, ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଲେ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ଟାକୁ ବୁଝିଦେବେ, କନସେପ୍ଟ ଟାକୁ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ତାକୁ ଆରାମସେ। ବୁଝିଲେ? so sample ହଁ, survey and base marketing, test marketing रे sample survey and test marketing रे ताले within a few people को नेकी survey करा जाए. What to say? ହଁ, ହଁ, ସାମ୍ପଲ ମାନେ ଆପଣ ପପୁଲେସନ ର ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ନଉଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା, Okay. ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ କନଜ୍ୟୁମର ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକା ଥିବେ, ଆପଣ ସାମ୍ପଲ ସାଇଜ ବି ଅଧିକା ହବ ନା। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ କନଜ୍ୟୁମର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ପଲ ସାଇଜ 50-100 ନେଇକି କରିପାରିବେ କି? କାରଣ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୁରେଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଯୋଉ 50-100 ଜଣଙ୍କୁ ନେଲେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର 10 ଲକ୍ଷ କନଜ୍ୟୁମରକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନଜ୍ୟୁମର ବେଶ 5,000 ଅଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ 300-400 କନଜ୍ୟୁମରକୁ ଦେବି, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉଠିକି ସେଇ 300-400 ଜଣ ପ୍ରପରଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ସେଇ 5,000 ଲୋକ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସାମ୍ପଲ ନେଇଯିବେ। ଟେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ଟା ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ବଟ୍ ବିଫୋର ଦ୍ୟାଟ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ whether your product will be accepted by the prospective consumers or not. ତ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉଛି ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଲୋକେସନ where you want to test market your product. ତ ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାର୍କେଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥ୍ରୁରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲୋକେସନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଲୋକେସନରେ ଆପଣ ଏନସିଓର କରିବେ ଯେ ଏଣ୍ଟାର ମାର୍କେଟରେ ଯେତେ କନଜ୍ୟୁମର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପର କନଜ୍ୟୁମର ଏଇ ଲୋକେସନରେ ଆସନ୍ତି। ସପୋଜ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବହୁତ ଗୁଡେ ଏରିଆ ଅଛି, ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ବାଛିବେ, ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ଏନସିଓର କରିବେ ଯୋଉ ଏରିଆ ମୁଁ ବାଛିଲି ଏଣ୍ଟାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଟାଇପର କନଜ୍ୟୁମର ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଟାଇପର କନଜ୍ୟୁମର ଏଇ ଏରିଆରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ କରେ, ଏଠି ଯଦି ମୋର ଟେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ। ସେଇ ବେସିସରେ ଆପଣ ଫୋକାଷ୍ଟିଂଟା କରିବେ। এটা হচ্ছে টেস্ট মার্কেটিং। বুঝতে? Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ অল। ନେଇଗଲେ ବହୁତ Thank you, ସମୟ sir. ଆପଣଙ୍କର। Thank you, sir. ରବିବାର ଦିନ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟସ। ରବିବାର କ୍ଲାସଟା ଆପଣଙ୍କର 7ଟାରୁ 8ଟା ଅଛି, ହେଲା, 8ଟାରୁ 9ଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।